उसमें चेंज किया गया है। दूसरा, अभी तक हम लोग जो इन्वेस्टर्स है, जो हमारे डिपॉजिटर्स है, वो एक नॉमिनी का नाम दे सकते हैं कि हमारा नॉमिनी होगा। कभी कभी हमने देखा तो जो अकाउंट होल्डर वह उसके साथ साथ नॉमिनी दोनों का एक साथ डेथ हो गया, तो फिर लिटिगेशन में जाता था कि कौन इसका असली वारिस है। तो यह बिल के माध्यम से कि नॉमिनी अप टू 4 और वो सक्सेसिव और सिक्वेंशियल अपना उसमें साइमल्टेनियस ऑल सिक्वेंशियल उसमें नॉमिनी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि लिटिगेशन कम होगा। अब कोई व्यक्ति कह सकता है कि पहला हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, यह इस प्रकार से नॉमिनी वह वहां पे डिक्लेयर कर सकता है। तो इससे लिटिगेशन भी कम होगा और उसके साथ साथ जो वाजिब जो लोग हैं, जो लीगल एयर है, उनको उसमें पैसा तुरंत मिल जाएगा। अदरवाइज कोर्ट में जाना होता था, कोर्ट में सालों लग जाते थे कि कौन इसका लीगल एयर है, कौन वारिस है, वो समस्या सुलझता नहीं था। तो इसके माध्यम से करोड़ों करोड़ों ऐसे जो हमारे डिपॉजिटर्स हैं, जो बैंक में पैसा रखते हैं, लॉकर में पैसा रखते हैं, उनको इससे लाभ मिलने वाला है और यह बहुत ही अच्छा एक तरीके से कदम है। सर, एक टेन्योर ऑफ द कोऑपरेटिव डायरेक्टर, इसके बारे में भी बोल रहे थे सर। सर, 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है और 351 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। हम सबको मालूम है कि जब चुनाव होता है तो वो 5 साल के टेन्योर के लिए होता है। अगर डायरेक्टर को 8 साल में अगर हम रिटायर कर देंगे तो 3 साल का वो गैप बचता है। तो उसको भरने के लिए यह कहा गया कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, इलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं, नॉमिनेटेड डायरेक्टर अदर देन द फुल टाइम डायरेक्टर, उनके लिए कहा गया कि 2 टर्म कर दो। जैसे 10 साल का कर दोगे तो 8 साल और 10 साल का एनोमली जो है वह दूर हो जाएगी। ये इससे स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और कोऑपरेटिव सेक्टर में इससे बहुत बड़ा उनको लाभ मिलेगा। अन्यथा ये समय समय पे डायरेक्टर बदलने से फिर दोबारा दिक्कत आती थी। सर, एक 60 साल पूरा पहले से चला आ रहा था कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो उसका डेफिनेशन में चेंज किया गया कि 5 लाख का अगर आपका इन्वेस्टमेंट होगा या 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल विच एवर इज लेस, ये बहुत 60 साल पहले से था। तो अब समय के ध्यान में रखते हुए इसको 2 करोड़ रुपए इसको 5 लाख को कर दिया गया है। तो यह अच्छा है सर, इसलिए इसको समय के अनुसार बदला गया है और इसका भी हम तारीफ करते हैं सर। ये रिम्यूनरेशन ऑफ जो ऑडिटर्स है, तो अभी जो है उसमें है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दे विल डिसाइड व्हाट विल बी द रिम्यूनरेशन फॉर द ऑडिटर्स। अभी देखिए बैंक का सर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू डिसाइड द फीस अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस ऑफ द बैंक। सो इसमें सरकार ने और ऑटोनॉमी देते हुए कि एक जो मोदी मंत्र है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसको ध्यान में रखते हुए यह कहा है कि नाउ द फीस ऑफ द ऑडिटर्स इट विल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। तो यह अधिक ऑटोनॉमी बैंक को देगा। ये बहुत अच्छा कदम है सर। इसी के साथ साथ अनक्लेम्ड अमाउंट जो है सर वो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में अभी तक केवल डिविडेंड जाता था। नाउ द गवर्नमेंट हैज टेकन अ व्यू दैट इट इज वेरी वेलकमिंग व्यू। नाउ द शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, व्हाटएवर इंटरेस्ट जो भी है, नाउ द एंटायर थिंग्स विल बी ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर एजुकेशन फंड और वहां से अपना जो इन्वेस्टर है जिसका क्लेम बनता है वो उसको क्लेम कर सकते हैं। सर, ये तो हम चेंज के बारे में बताए सर बैंकिंग की जहां तक बात है कि बैंक किस प्रकार से बैंक में क्रांतिकारी बदलाव आया है, बैंक में व्यापकता किस स्तर तक बढ़ी है। एक 2014 का जब समय था सर, उसमें सबने देखा कि यूपीए के समय में किस प्रकार से फोन बैंकिंग होती थी, बैंकों में इंटरफेरेंस होता था, बड़े रसूख वालों को ही लोन मिलता था, छोटे वालों को लोन नहीं मिलता था, क्राइसिस थी, बैंकों के पास कैपिटल नहीं बचा था कि लोन देने के लिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उनका बिल्कुल खत्म जैसा हो गया था। ये बहुत बड़ा क्राइसिस था। और जब बैंक की स्थिति बिगड़ चुकी थी, बैड लोन से लेकर के एसेट क्वालिटी इतनी खराब थी तो सोच ही नहीं सकते थे। जब इतनी स्थिति खराब थी, अगर बैंक की स्थिति खराब होगी तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा। वो बहुत ही क्राइसिस का समय था उस। और
चूंकि लोगों के बैंक अकाउंट नहीं थे, जो आम नागरिक है, जो आप बात कर रहे हैं, आम नागरिक के बैंक अकाउंट नहीं थे, तो क्या करते थे, साहूकारों के पास जाकर के पैसा लेते थे और उनको ब्याज दे दे करके थक जाते थे, जमीन गिरवी रखते थे। यह पीड़ा कांग्रेस के समय किसी ने नहीं सोची। ये 67 साल हो गया, आम व्यक्ति की पीड़ा, उसको लोन मिल सके, कम ब्याज पे लोन मिल सके, बिना कोलेटरल के दिए हुए उसको लोन मिल सके, इस बात की पीड़ा अगर कोई समझी और उस पीड़ा को दूर करने वाला कोई व्यक्ति है, तो मैं गर्व से कहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो करके दिखाए हैं। सब मुद्रा लोन में सर, यह 2015 में शुरू हुआ कि छोटे जो व्यवसाय करना चाहते हैं उनको अगर लोन की जरूरत है तो कहां जाएं, उनके पास तो कोई जमीन भी नहीं होता था गिरवी रखने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने 2015 में कहा, मुद्रा स्कीम ले आए और उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि आप अपना छोटा मोटा व्यवसाय करो, हम आपको मदद करेंगे, कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। और आज सर मैं देखते देखते मैं कह सकता हूं 48 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिल चुका, 48 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिल चुका है सर। स्टैंड अप योजना सर, और इसलिए भी बधाई दूंगा सर, पहले 10 लाख रुपए का मुद्रा लोन था, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में 10 लाख को 20 लाख रुपए कर दिया, इसलिए विशेष अभिनंदन सर। स्टैंड अप योजना, इसके विशेष रूप से महिला, एससी और एसटी के लिए है। वो उनके लिए अलग से बैंकों में कहा गया कि स्टैंड अप योजना के अंतर्गत अगर एससी, एसटी या महिला है तो उनको लोन देने का काम करो, जिससे भी वो भी व्यवसाय कर सके और लोगों को भी रोजगार दे सके। 53,600 करोड़ रुपए का स्टैंड अप योजना के अंतर्गत अभी डिसबर्समेंट हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इसलिए, 1 जून 2020 में जो कोविड का समय था, तो कोविड के समय उन्होंने कहा रेड़ी वाले, पटरी वाले, ठेला वाले बेचारे कहां जाएंगे, ये बहुत संकट में है, इनका संकट कौन दूर करेगा, इनको तो इस समय कोई पैसा भी लोन भी देने वाला नहीं है। उस समय पीएम स्वनिधि योजना लेकर के आए कि यह रेड़ी पटरी वाले हैं उनको हम लोन देने का काम करेंगे, कोई गारंटी के रूप में कोलेटरल मत दो, और अब समय पे पेमेंट करोगे तो 7% का इंटरेस्ट की सब्सिडी भी देंगे हम। और देखते देखते सर आप 94 लाख लोगों को, ऐसे रेड़ी वाले पटरी वाले 94 लाख लोगों को पीएम स्वनिधि के अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपए देने का काम कोई किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इस प्रकार से विश्वकर्मा योजना से लेकर के अनेकों योजना सर, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखिए सर, एक यूपीए का समय था तो कृषि क्षेत्र का जो पूरा लोन देते थे, तो उस समय 7,30,000 करोड़ रुपए, 7.3 लाख करोड़ रुपए यूपीए के समय था, और आज वह एग्रीकल्चर लोन 7 लाख करोड़ रुपए से 27 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है, किस प्रकार से कृषि क्षेत्र में लोगों को। हाँ, अब सर चलिए सर, व्यापकता, जैसे मैंने कहा कि बैंकों के व्यापकता कैसे बढ़ी सर। देश की आजादी के बाद 2014 तक अगर हम देखें तो देश भर में, हम पीएसयू बैंक की बात कर रहे हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक से लेकर के प्राइवेट बैंक को जोड़ेंगे तो बहुत अधिक संख्या होगी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में सर देश की आजादी के बाद केवल 1,17,990 ब्रांचेस थी। इसका मतलब बहुत सारे लोगों के पास ब्रांच की सुविधा ही अवेलेबल नहीं थी। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल में 36% बढ़कर के अब 1,60,501 ब्रांचेज हो गई है। इतनी अधिक संख्या में ब्रांचेज जब बढ़ गई है तो लोगों को सुविधा भी मिल रही है, तभी तो जाके लोन भी ले रहे हैं, पैसा भी अपना जमा कर रहे हैं। यह व्यापकता बढ़ी है सर। इसी सेमी अर्बन क्षेत्र में 65% और रूरल क्षेत्र में 32% बैंकों का नेटवर्क फैला हुआ है। यह हमारे प्रधानमंत्री जी के समय की योगदान सर। आज आरटीजीएस और एनईएफटी 24 घंटे आप कभी भी कहीं से भी ट्रांसफर करा सकते हैं। भीम ऐप और यूपीआई में तो क्रांतिकारी बदलाव आया है डिजिटल टेक्नोलॉजी में। पूरा विश्व भर में अगर देखेंगे तो सबसे अधिक अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन भीम यूपीआई के माध्यम से हो रहा है तो भारत में हो रहा है 164.4 बिलियन ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल 93-94। इस प्रकार से यह क्रांतिकारी बदलाव डिजिटल टेक्नोलॉजी में आया। सब
अब बैंकों की स्थिति खराब थी सर। 2015 में सर प्रधानमंत्री जी ने कहा सभी बैंकों से, देखो भाई लोन तो यूपीए के समय दिया गया है और यूपीए के समय जो लोन दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया, आंख बंद करके दिया है, टोपी घुमाया गया है। अब ऐसा करो सभी बैंकों के आप रियल में कोई डरने की जरूरत नहीं, रियल में जो एसेट है उसको एक यूआर के माध्यम से एसेट क्वालिटी रिव्यू करो, और जो डाउटफुल डेट्स लगता है, जो लोन आ नहीं सकता, उसको छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके समय तो छिपा रहे थे, तो उसको नए नए इंस्ट्रूमेंट लिया करके, तो उसको छिपाने की जरूरत नहीं, उसको आप रिव्यू करो और उसको डिस्क्लोज करो। अगर डाउटफुल है, एनपीए है, तो उसको दिखाने का काम शुरू करो सर। तो उस पे सभी बैंकों ने काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद 4R पे की रिकॉग्निशन ऑफ एनपीए, रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और जो हमारे रिपोर्टिंग जो है उसके माध्यम रिफॉर्म, उसके माध्यम से सरकार ने 4R पे काम शुरू किया। और आईबीसी 2016 में आईबीसी कानून ले आए, एनसीएलटी, आरपी इत्यादि का सब प्रोविजन हुआ। सर आईबीसी के आने के बाद जो ये लोग कहते हैं कि आपने इतना लोन माफ कर दिया, सर इनको अक्ल नहीं, मैं अच्छा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है सर, अगर कोई आपका लोन नहीं आ रहा है तो उसको आप क्या करोगे, बैड डेट्स प्रोवाइड करके अपने बुक्स में रिटर्न ऑफ कर लोगे, लेकिन तगादा नहीं बंद होता, तगादा चालू रहता है, ब्याज उस पर चालू रहता है, वो अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि वो आएगा नहीं आएगा इसे अकाउंटिंग उसकी नहीं होती। तो जो उसको रिटर्न ऑफ को ये कहते हैं कि भाई आपने माफ कर दिया, माफ कर दिया, ऐसे थोड़ी माफ होता है। माफ अगर करना, आपको निकालना हो तो आप बारोवर के जो एसेट है उसको आप देखो, उसके रियलाइजेशन वैल्यू आज के दिन में कितना है, और उस रियलाइजेशन वैल्यू में सरकार रिकवरी कितनी कर रही है, तब आप माफ को आप उसमें कह सकते हो इतना माफ किया नहीं किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, हमारी सरकार में आईबीसी आने के बाद जो फेयर मार्केट, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट थी उसका 100% नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स का 122.81%, मतलब जितनी फेयर वैल्यू थी उससे अधिक अगर रिकवरी करने का काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है। 3,40,000 करोड़ रुपए की सर रिकवरी हुई सर बैंकों का। फिर उसके बाद कंसल्टेशन करके कई बैंकों को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, यूबीआई, इंडियन बैंक, इनको सब मर्ज किया गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनको मर्ज करके कि जैसे बैंकों की साइज जब बड़ी होगी तो बैंक बड़े लोन भी दे सकेंगे, बैंक में और इफिशिएंसी भी आएगी। यह कठोर निर्णय लेने का काम अगर कोई किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है सर। हम खुद ही बजट में देखते थे, जब बजट आता था तो होता था कि बैंकों को कैपिटल देनी पड़ेगी क्योंकि बैंकों में लॉस हो रहा है, और लॉस इसलिए हो रहा सर कि एनपीए, जब यूपीए की सरकार थी सर, हमारी सरकार 96 में 16% ग्रॉस एनपीए था, उसको 2004 में हमारी सरकार गिरा, इनकी सब सरकार थी 16%, हम कम करते करते 7.8% उस समय एनडीए की सरकार ले आई। फिर इनको गलती से सत्ता मिल गई, 12.3% एनपीए हो गया, 12% ग्रॉस एनपीए, और 12.3% एनपीए जो इन्होंने छोड़ा था, यह सरकार की नीतियों का, सरकार के बनाए गए कानून का नतीजा यह है कि आज नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए दिसंबर 2024 का केवल 2.6% है, और नेट एनपीए केवल 0.6%, 1% से कम नेट एनपीए सर। और यही नहीं सर, जो पहले बैंकों का लॉस होता था सर, बैंकों में पहले लॉस होता था 2013-14 में, तो किसी तरीके से 37,000 करोड़ रुपए का थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा है। उसके बाद एनपीए के कारण 2,07,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। इन्हीं के समय के काले करतूते थे सर, हमने सारे आर्टिकल मीडिया से लेकर के एडिटोरियल सब कर डॉक्यूमेंट कर है। और सर 2023-24 का जो इनके समय लॉस होता था, 2023-24 में पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहा हूं, 1,41,000 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, जो इनके समय लॉस होता था। और अगर 9 महीने का देख ले सर, इसी दिसंबर 2024 का, दिसंबर 2024 में सर 1,29,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और यह मान के चलिएगा जब 25 का आएगा तो पिछले साल का जो प्रॉफिट है उससे भी ऊपर वो पार करेगा।
और आज जो बैंकों को माननीय निर्मला सीतारमण जी समय समय पे बैंकों के को पैसा देती थी, क्योंकि उनके पास बिजनेस करने का कैपिटल नहीं था, और कुल मिलाकर 3,26,000 करोड़ रुपए हमारे सरकार ने दिया कि बैंक अपने पैर पे खड़े हो। इनके काले कारनामों को हम क्यों भुगते, बैंक क्यों भुगते? तो 3,26,000 करोड़ रुपए उस समय देने का काम किया, और आज वही बैंक सर, वही बैंक आज वह प्रॉफिट कमा रहे हैं, और वही बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत बड़ी संख्या में वो आज डिविडेंड भी देने का काम कर रहे हैं। वो 55,000 करोड़ रुपए से अधिक वो डिविडेंड देने का काम किया सर। यह उस समय सब बहुत स्थिति खराब थी, आज बहुत बैंक बहुत सुदृढ़ हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है सर कि इन जो कानून आए इनके बदलाव के माध्यम से हमारे डिपॉजिटर्स, हमारे इन्वेस्टर, हमारे स्टेक होल्डर्स और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इनको बहुत बड़ा इससे लाभ होने वाला है। मैं इस बिल के समर्थन में बोलते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, और माननीय वित्त मंत्री जी को इसके लिए ढेर सारा बधाई देता हूं। इस प्रकार के रिफॉर्म जो समय समय पे ले आ रहे हैं, इसलिए उसका मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए कांग्रेस के मित्रों से इतना ही मैं निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जो अच्छी बात है उसकी तारीफ कर लोगे तो जनता भी आपको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत समर्थन दे देगी। अदरवाइज जो हालत है धीरे धीरे ऐसा सुपड़ा साफ हो जाएगा कि एक दो राज्य में बचे हैं वो भी साफ हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री साकेत गोखले। Thank you, sir. So because this bill pertains to banking laws, I want to start by talking about the flagship banking scheme of this government. So a few years ago, the government came up with this idea of providing Jan Dhan bank accounts to every Indian. The government's data claims that they opened a total of 54 crore Jan Dhan accounts. Fantastic. The idea is great, sir. What the government doesn't conveniently say is out of these 54 crore Jan Dhan accounts, 11 crore accounts are dormant, which means they're not being used. These accounts are completely dormant. And how much money do these dormant Jan Dhan accounts have, sir? These accounts have about 14,000 crores. There is 14,000 crores of poor people's money, because that's what Jan Dhan accounts were created for, lying unused in these accounts. People are not able to access their own money. Very important number, sir, 14,000 crores. Because incidentally, sir, 14,000 crores is also the same amount that the union government owes to my state of West Bengal under public distribution scheme. So deprivation is a dirty tactic of the Modi government. It deprives poor people of their money, and it deprives opposition state of their rightful dues. So we're talking about banking laws here. So please tell me 21 lakh Manrega workers in Bengal who have not been paid. Speak on the subject. It's not Bengal discussing. Sir, as per law, you know, you have to discuss on this banking laws amendment bill. I want your ruling on something, sir. I would request your ruling on something. I will read the rule. Because what you said, the speaker before me was talking about yojnas of the Modi government. Please. So why is our voice throttled when you bring up Bengal's issue? No, sir, it's for all. Why separate rules for Bengal, sir, is my only question. No separate rule. Before I completed my sentence, you stopped me, sir. No, sir, because I not completed. My time may be paused, sir. It's already very clear that सब्जेक्ट जिस पे बिल डिस्कशन हो रहा है आप उसी पे बोलेंगे। मैं उसी पे बोल रहा हूँ। नहीं बोल रहे हैं उस पे ना। उसमें मैं बैंक अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं ना प्रधानमंत्री का इसीलिए रोका जा रहा है सर कि मैं प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आप सर बंगाल का मुद्दा आता है तो रोक देते हैं सर। You are wasting your time. This treatment of Bengal is not acceptable, sir. The way Bengal is being treated. You speak on the subject. That's been on the subject. 21 lakh Manrega workers are not getting money in their bank accounts. Who is giving them? Mamata Banerjee is giving them after the union government has deprived the state, sir. Let's talk about banking in detail, sir. Banking talks about deposits and loans. So today, bank deposits have gone down and bank loans have gone up. The number of deposits in banks, sir, have grown at 11%. On the other hand, sir, the amount of loans taken by Indians have grown by a shocking 18%. So when asked a question in Parliament in February last year, the government told me that the total amount of unsecured outstanding loans in India is 62 lakh crore. Unsecured loans, sir, matlab credit card and personal loans. So the amount
owed by Indians, average Indians on only credit cards and personal loans is 62 lakh crore. That is 25% of India's GDP. So people are forced to take loans because of economic distress. Let's come to gold, sir. In the first 9 months of this fiscal year, so the number of gold loans went up by 68%. 68%, sir. So distress in the economy is forcing people to pledge their gold and take loans on that. Sure, the value of gold going up has benefited people get a high amount on that, sir. So I remember during the Lok Sabha elections, Prime Minister Modi had said opposition will take away your Mangal Sutra. So today under the Narendra Modi government, women are having to pledge their Mangal Sutra to take loans to pay their monthly expenses, sir. Who's taken away the Mangal Sutra of women? It's not the opposition. It's under the Honorable Finance Minister, the Modi government has done that. So a report by Perfios and PwC, which was published in February. These are the statistics of people in urban areas. I'm not even talking about poor people. So 33% of the monthly salary goes towards paying EMIs on loans, 33%. So people spend the highest amount on their obligatory loan expenses, which is 39% of their total spending, followed by 32% for basic necessities. So 70% of income EMI भरने में और आटा और सब्जी खरीदने में जाता है. This I'm talking about the urban areas. Imagine what the condition in the rural areas is. So people with an income of about 1 lakh are paying approximately 46% of their after-tax salary only on servicing the existing debts. There is a loan crisis, sir. So the government itself had admitted that consumption is down in our economy. So therefore, people are not taking loans to buy new products or to consume something new, so they're taking loans to service their existing loans. So the other side of this problem is that Indian banks are being crushed under the burden of non-performing assets. In just the last 5 years, Indian banks have a staggering 10 lakh crores in non-performing assets. So how does this government solve the NPA crisis? This is not created by ordinary people. This is created by a bunch of 10, 15 people who defrauded the system and then left the country. So banks have now been told to write off NPAs. What is a write-off, sir? A write-off is a beautiful accounting technique where these NPAs are taken off the balance sheets of banks. It doesn't mean that they're repaid. It just means they're taken off to make the balance sheet look healthy. So NPAs karo, write-off karo, banks ka paisa jayega, but this money is still not being recovered, sir. So as I said earlier, deposits are going down and loans are going up. When we look closely, sir, we find an interesting trend. So corporates are borrowing less. Corporates are in fact sitting on a lot of money since 2019 after corporate tax rate was slashed. They're not investing this money in the market is a different thing, but corporates are not borrowing. So it is average people, MSMEs, who are having to borrow money every month, sir. So the loan burden of average Indians, farmers, small businesses is going up. That is the reason today, sir, our GDP growth has come crashing down to mere 5.4%, which is the lowest in 6 quarters. So last year, our government was celebrating the big growth in the stock market, sir. Fantastic. After the exit poll, before the exit polls were conducted, Prime Minister Modi, Honorable Home Minister Amit Shah came on TV, said, "Aap stock kharido, buy stocks, the market is going to shoot up." Great. People borrowed money. People used their savings, put all of that money into the stock market, sir. Now what has happened? The people expected. PM Modi ji ne kaha hai to kuch soch ke kaha hoga. PM Modi said stock markets will rocket. Amit Shah ji said stock markets will rocket. In the last 3 months, sir, after the US elections, stock markets have crashed. Who has lost the money, sir? Average people. These average people, because loans are easy, app ke upar aapko loan milta hai. They went, they took loans. PM Modi ne kaha hai, put that money into the stock market. Savings of average Indians have been wiped off because the Prime Minister decided to be a stock market expert on live television. So, why are people not depositing their savings in bank accounts? Today morning, there was a report in the Mint, sir, which said that now, with an expected interest rate cut, banks are now going to cut their deposit rates. Because somewhere the government wants to stimulate consumption, people are not consuming, so let's cut interest rates. That's the strategy. Banker deposit rates will go down. So with the way food price inflation is about 10%, what is happening to deposits in banks? The interest rate that I'm getting on my deposit is less than the rate of inflation, which means when I'm keeping money in the bank, sir, I'm actually losing money. That's why people are not keeping it in the bank deposits, sir. They're putting this money into places like the stock market, where they feel there'll be valuations.
But these are also very risky areas, sir, where people naturally, as the bubble has burst, have ended up losing their money, sir. So what is the government doing to make deposits attractive? It is forcing banks, saying market deposits, your ratio is really bad, your credit deposit ratio is bad. They're forcing banks to do marketing. Banks are marketing these deposits aggressively to people. But what is happening, sir? There is a major liquidity crisis in the country because banks can only offer money when there is liquidity in the system, sir. So today banks are being encouraged to provide, bring in deposits. Deposits are liabilities for banks, sir. Loans are assets. These deposits are coming in, give attractive interest rates on it. When there is no liquidity in the market, sir, this is affecting the margins of the profit margins of the banks, sir. If tomorrow, let's say the gold which they're holding right now on behalf of people, the price of gold comes crashing down. Gold loans which is used as collateral, gold prices crash, banks are not going to have the margin that is required to service that money, sir. So in the last 5 years, our public sector banks have made a revenue of 8,500 crores through a very unique mechanism. What is that mechanism, sir? Penalties on not maintaining minimum balance. You are a poor person, you have no money in your account, you don't maintain a minimum balance, we're going to charge you a penalty. 8,500 crores, sir, has been earned by taking money from poor people who don't have money to even keep a minimum balance in their account. So the other harassment, this happens with the poor. With the middle class, every 3 months, do your KYC, do a re-KYC, do a re-KYC. Sir, PAN cards are linked to bank accounts, Aadhaar is linked to bank account. What is the need for this constant KYC? But they make people keep doing that. Please. People have to do KYC or bank accounts get frozen. And once these accounts get frozen, sir, it becomes a major nightmare. Today, people have to go to the branches. People don't have the time to do that. But every time, do your KYC or we'll freeze your account. No questions asked. When the data is there with the government is very good at using data for other things. Before elections, we get a WhatsApp message about Viksit Bharat during the code of conduct. So they have the data to send WhatsApp messages during elections. They don't have the data to find out where a person is staying using the Aadhaar and PAN. Why do I need to keep doing KYC every 2 months, sir? Sir, all I wish to say in conclusion is that piecemeal legislation like this banking amendment law is useless until we address the structural problems faced by our banks. And these problems will continue to exist unless we implement drastic economic reforms. So the finance minister thinks that the gaping wounds in our economy can be fixed with a band-aid. The first step, sir, towards any problem is to first accept it. When you accept is when you start making amends and changing. This government for 11 years is not willing to accept, sir, that there is a problem. We very clearly saw this in a visionless union budget where there was absolutely no sort of reform done. So the Modi government has dangerously started believing its own jumlas. It started this propaganda to mislead the people, but now in a shocking turn of events, the Modi government itself is actually believing sab changasi. They have deluded themselves into thinking that everything is fantastic under our government, everything is great, things have never been better before. Sir, our economy and our banking system cannot be fixed until the government removes its blindfolds. Sir, I strongly urge the Honorable Finance Minister to come back to this house with some real actual banking reforms instead of bringing pointless bills like this. Banking laws amendment, which does absolutely nothing to fix our banking system. Thank you, sir. Thank you. माननीय सदस्यगण, मैं आप सबको पुनः सिर्फ याद दिलाने के लिए read rule number 110 of rules and procedure. The discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submission of arguments either in support of the bill or for the rejection of the bill. In making his speech, a member shall not refer to the details of the bill further than is necessary for the purpose of his arguments, which shall be of a general character. तो बहस में हम इसका ध्यान रखें rules procedure का. Ms. KRN Rajesh Kumar. हाँ. Honorable Chairman, sir. Please. Mr. Derry Kumar. Sir, I'm glad you've referred to this rule from the chairman with full respect, sir. My request to you, sir, is the timing of this observation is yours to choose from. It is happening more from this side because you chose to read this, which is your prerogative, after somebody from this side finished his speech. This is so your my earnest perception. request, Derek, my humble request. Sir, I request you. Please take your seat. 1 minute, sir. Let me finish. Let me finish. You have already told you. No. Now we have told. माननीय, please, आपसे भी आग्रह, please नहीं.
चेयर ऑन द रेड प्लीज, ये सब नहीं, आपस में सब नहीं। माननीय सदस्यगण, आप में से एक एक व्यक्ति, डेरिक जी बड़े सीनियर मेंबर हैं, आप सदन में नहीं थे, कोई बोल रहा था इधर से कोई इधर से। मैं हमेशा कहता हूं कि सब्जेक्ट इट्स योर परसेप्शन व्हिच यू आर टेलिंग, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। केआरएन राजेश कुमार, you speak, nothing is going on record, nothing is going on, you speak. Honorable Chairman, You speak. sir, Yes. I am very thankful to the Honorable Tamil Nadu Chief Minister Talabadi and Honorable Deputy Chief Minister Anand, also our floor leader Tiruchi Siva, for giving me this time to speak on the Banking Law Amendment Bill 2024. I have a few concerns. Sir, I am coming to the nomination system, especially the amendment to section 45 A, when a large number of banks currently do not have a single nominee, as per the RBI report on customer service published in 2023 records. Expecting to have up to 4 nominees, the sound saying, if you do not have bread, eat cake. The concept of appointment of nominee by the account holder under Banking Regulation Act is to have smooth distribution of asset among the legal heirs after the death of the account holder. The nominee acts as a power of attorney holder. Only difference between power agent and nominee is authority given under power of attorney ceases when principal dies, whereas the role of nominee will come into play after principal dies. Nominee is not a legal heir. If more than one nominee is appointment, and if there is no conscious decision taken among nominees, the deposit amounts cannot be withdrawn smoothly for disbursement to legal heirs. This raises significant concerns and highlights the need for careful consideration and clarification on the nominee system. Sir, second, the auditor remuneration. I would like to address the amendment of section 17 regarding the auditor remuneration. The additional powers given to bank may lead to recruiting his known auditor and with higher remuneration, only to manipulate the audit report that may lead to hide corrupt practices. Therefore, it is best to fix it by RBI in consultation with the union government, which is already existing practice. Sir, second, the PAN card mandates. In the village primary cooperative bank mandates the rural people to have PAN card even for their minimal deposit. It is complicated for the village people to maintain the deposit account. This affect the saving habits of our rural people. I urge the government to relax the norms for the deposit account, especially for low value transaction in primary cooperative banks and in the nationalist bank as well. The exemption from the minimum balance penalty. The bank account holder face issue with automatic deduction as penalty when their balance falls below the minimum requirement. This affects low-income individuals and daily wages earners who struggle to maintain their accounts. I urge the Honorable Finance Minister to address this concern as well. The inclusion of cooperative bank in central government schemes, sir. It is very important. Our rural cooperative banks have made significant achievement in digitalization. However, the central government has not considered the cooperative banks to deliver the central government schemes. So, considering its potential, I urge the government to include the cooperative banks in central government scheme. Then only the benefits of central government scheme can be availed by cooperative bank account holder. For example, sir, the portal churches, Vidya Lakshmi education loan, Pradhan Mantri Awas Yojana, housing loan, etc. Sir. In addition, kindly consider the cooperative banks to include in single nodal SNA and account and central government schemes account, sir. Sir, this is very important. The exemption of TDS from the cooperative central bank, sir. In rural areas, the primary agriculture cooperative credit society act as a key source of credit for farmers, supporting them in financing agriculture activities and allied activities through district central cooperative bank. It is also function for the disbursement of the state government relief fund, including subsidies, drought relief, and disaster compensation and another forms of financial assistance through
cooperative central bank. These societies have been affected by under section 194N while they transacted the farmer funds. Hence, it is essential to consider the exemption of tax deduction at source on this account to ensure the smooth and efficient delivery of financial aid to beneficiaries, madam. Tax exemption for NABARD. So, I honorable request the honorable finance minister. The NABARD is a backbone. The NABARD is a backbone of our rural economic. It is play the vital role in agricultural credit, the rural infrastructure development and promoting sustainable income across the nation. It is the true mother bird of our rural sector, the development and supporting the very foundation of our national wealth. However, the financial framework under the NABARD operates severely restricts its ability and fulfill its mandate. The imposition of tax on NABARD operation drains resources that should directly uplift rural communities through their institution development and many promotional initiatives such as watersheds and tribal development projects. I urge the government, please remove the tax imposed on NABARD. It is very, I kindly request the Honorable Finance Minister to relax the impose the income tax to the NABARD. For the current financial year, the priority sector lending funds allocated to NABARD have been reduced. As a result, the consensual crop loan to various cooperative banks have been significantly impacted across the India. Sir, not only Tamil Nadu, all over India, now the NABARD bank decreased the crop loan because the priority sector lending fund is not allocated for NABARD. So I kindly request the Honorable Minister consider it, sir. Then, sir, in first time in India, all agriculture loan issued by the cooperative society were waived by the great eminent leader, first Chief Minister Kalainer during 2006 to tune of rupees 7,000 crores. In the same line, good governance is given by our Chief Minister Talabadi. Sir, the ADMK government has given just a paper waiver that to only to crop loans. After assuming the power of Chief Minister of Tamil Nadu, our great leader Talabadi only settled the entire waiver amount nearby rupees 13,000 crores to the cooperative societies, madam. Hence, our government is farmer-friendly government, have done many welfare activities to farmers. The department name agriculture is also changed into the agriculture farmer welfare department in Tamil Nadu. It's only state the Tamil Nadu under the leadership Talabadi gives a separate budget for agriculture. Madam, the Honorable Finance Minister not in house, but I request now the cooperative ministry, the initiative, the one district, one cooperative bank. That policy is now initiative by the cooperative ministry. In the circumstance, I humbly request the Minister of Finance and the Minister of Corporation provide the support the newly formed district central cooperative bank by expediting the granting of license and another support such as share capital and infrastructure development. Sir, only the finance ministry given the license for the district central cooperative bank, but the corporation ministry only support for the share capital and another infrastructure. That now the policy is implemented by the Ministry of Corporation, but the newly formed DCCP, Central Cooperative Bank, are growing well and sustainable, giving this share capital subsidy, another than infrastructure subsidy, then only the finance ministry and corporation ministry is win-win situation, madam. Then I have come from the conclusion, madam. I urge the Honorable Finance Minister to review the Banking Law Amendment Bill 2024 and by addressing this concern and implementing the necessary changes. Thank you, madam. धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री राघव चड्डा जी, आपके पास 9 मिनट। शुक्रिया मैडम कि आपने मुझे बैंकिंग बिल 2024 पर बात करने का मौका दिया। सर, बैंक ईंट या सीमेंट से बनी किसी इमारत का नाम नहीं है। बैंक सिर्फ किसी स्टील या एल्यूमिनियम से बने एटीएम का नाम नहीं है, और बैंक
ना ही एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर दौड़ रहे बैंक ग्राहकों की उस दौड़ का नाम है। बैंक नाम है विश्वास का, बैंक नाम है अधिकार का, न्याय का, समानता का। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह विश्वास जो ग्राहकों का बैंकिंग व्यवस्था में था वो कहीं ना कहीं कमजोर होता नजर आ रहा है, और उसके कुछ बुनियादी कारण, बहुत ही बेसिक कारण आज मैं सदन में आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहला, पुअर कस्टमर सर्विस। यदि आज किसी ग्राहक को सरकारी बैंक में किसी काम से जाना हो तो मान लीजिए उसके ग्रह खराब चल रहे हैं और दिहाड़ी भी खराब होगी। कोई नौकरी पेशा आदमी हो तो ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, कोई स्टूडेंट हो तो प्रैक्टिकल का एग्जाम मिस करना पड़ता है, यहां तक कि साधारण सी पासबुक अपडेट कराने भी जाना हो तो वो भी एक संघर्षशील सफर में तब्दील हो जाता है। मैडम, आप जब किसी सरकारी बैंक में घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि 80 या 90 की दशक की किसी इमारत में आ गए हैं, जहां पे दीवारें उखड़ रही होती हैं, पंखा अपनी मर्जी से चलता है और लाइनें रेल टिकट से भी ज्यादा लंबी होती हैं। इसके बाद जब आप काउंटर नंबर 1 पे पहुंचते हैं तो बताया जाता है काम यहां नहीं होगा, काउंटर नंबर 4 पर जाइए। जब काउंटर नंबर 4 पे जाते हैं तो बताया जाएगा यहां पर भी काम नहीं होगा, फर्स्ट फ्लोर पर जाइए। और जब आप थके हारे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि लंच हो गया है, लंच के बाद 2 बजे आइएगा। 2:15 पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि लंच एक्सटेंड हो गया, अभी कर्मचारी गुलाब जामुन खा रहे हैं। यह व्यवस्था है कस्टमर सर्विस की एक सरकारी बैंक में। और आज हम जहां चांद पर पहुंच गए, यूपीआई से गोलगप्पे खरीद रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारी बैंकिंग व्यवस्था 80-90 के दशक से बाहर नहीं आ पा रही है। अभी आरबीआई के गवर्नर ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्तीय वर्ष 23-24 की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि 95 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर सर्विस से संबंधी कंप्लेंट्स आई हैं। और ये तो वो कंप्लेंट्स हैं जिन लोगों को पता था कंप्लेंट कैसे दर्ज करानी है और उन्होंने दर्ज कराई। न जाने ऐसी कितनी कंप्लेंट्स होंगी जो सिस्टम में कैद ही नहीं हुई। इसी के साथ साथ बैंकिंग कोड और स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया का एक सर्वे बताता है कि 45% बैंक कस्टमर्स बैंकिंग व्यवस्था से डिससैटिस्फाइड है, असंतुष्ट हैं। और मैं चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे कि डिजिटल सर्विसेज का एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑडिट कराना चाहिए सरकारी बैंकों का, कि क्या हमारी सरकारी बैंकों की वेबसाइट का इंटरफेस या मोबाइल एप्लीकेशंस सरल हैं, अच्छी हैं, या कस्टमर्स उससे त्रस्त हैं। दूसरा बड़ी समस्या है रूरल इंडिया के अंदर लिमिटेड एक्सेस टू बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आइए गांव की ओर चलते हैं। मैडम, क्या हमारी बैंकिंग व्यवस्था ग्रामीण इलाकों तक पहुंच चुकी है? नाबार्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि 50% ऑफ रूरल इंडिया इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ एडिक्वेट एक्सेस टू बैंकिंग। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की आरबीआई की 2020 की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत में हर 100 में से मात्र 54 लोगों तक ही हमारी बैंकिंग व्यवस्था जैसे तैसे पहुंच पाई है, और 30% से ज्यादा रूरल हाउसहोल्ड आज भी ऐसे हैं जो पूरी तरीके से अनबैंक्ड हैं। और मैम, बैंकिंग की ग्रामीण इलाकों में अगर बात करें तो बैंकिंग व्यवस्था ने ग्रामीण इलाकों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। पहले तो बैंक की ब्रांच गांव के पास नहीं है। जब वो बूढ़ा आदमी भोला भटका बैंक की 5-10 किलोमीटर दूर ब्रांच तक पहुंचता है तो पता लगता है कि बिजली गुल है। बिजली आ जाती है तो पता लगता है सर्वर डाउन हो गया है। सर्वर भी चल जाता है तो पता लगता है आधार सीडिंग में दिक्कत है, फिंगरप्रिंट मिसमैच हो रहा है, या बैंक अकाउंट की मैपिंग ही नहीं हो पा रही है। डॉक्यूमेंटेशन से लेकर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म से लेकर लैंग्वेज के चैलेंजेस तक ग्रामीण इलाकों में लोगों को झेलने पड़ते हैं। और सबसे ज्यादा बैंकिंग फ्रॉड भी गांव के भोले भाले आदमी के साथ होता है। इसी के चलते हमारे गांव का आदमी प्राइवेट निजी साहूकार के पास जाकर लोन लेना बेहतर समझता है, ना कि किसी बैंक के पास जाकर। और जब वे साहूकार के पास जाता है तो ना वहां पेपर वर्क होता है, एक इजियर एक्सेस होता है, फियर ऑफ बैंक और इलिटरेसी नहीं होता। बहुत बार तो मॉर्गेज पे भी कुछ नहीं रखना पड़ता, इसलिए वो साहूकार से ब्याज पे पैसा उठाता है। लेकिन साहूकार उसे मनमानी दाम पर वो ब्याज पर पैसा देता है। 60 से 80% सालाना का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, जिंदगी भर के लिए उसकी गुलामी लिखवा लेता है, और वो बेचारा गांव का भोला भाला आदमी डेट ट्रैप में फंस के रह जाता है। मेरी तीसरी बड़ी समस्या जो मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा वो है साइबर फ्रॉड और डिजिटल फ्रॉड्स इन द बैंकिंग सेक्टर। साइबर फ्रॉड्स वर्ष 2023 में 75,800 घटनाएं सामने आई जो कि कंप्लेंट्स दर्ज हुई। वर्ष 2024 आते आते 75,000 से बढ़कर यह आंकड़ा 2,92,000 हो गया, यानी कि 285% के बैंकिंग फ्रॉड्स की घटनाओं में इजाफा देखा गया। और 2100 करोड़ रुपए लोगों के इस बैंकिंग फ्रॉड के चलते जीरो हो गए, शून्य हो गए, उनका नुकसान हो गया। और सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स इसमें यूपीआई रिलेटेड बैंकिंग फ्रॉड्स की आई हैं। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनी थेफ्ट के साथ साथ उतना ही जरूरी है डेटा थेफ्ट।
जब आप बैंक को पूरे विश्वास के साथ अपना डेटा देते हैं, अपना पैन देते हैं, अपना नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, तमाम चीजें देती हैं, क्या बैंक आपके डेटा को सुरक्षित रख पाता है? क्या बैंक वो जाने अनजाने में या डेटा चोरी के माध्यम से वो सारा हमारा डेटा मार्केटिंग कंपनियों के पास, क्रेडिट कार्ड कंपनियों के पास, लोन देने वाले, फ्लैट बेचने वाले लोगों तक नहीं पहुंचता? एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में एसबीआई के 3 मिलियन कस्टमर अकाउंट डेटा लीक हो गया और तमाम बैंकिंग हिस्ट्री लीक हो गई। 2021 में मोबीविक का 8.2 TB का केवाईसी डेटा ही लीक हो गया। 2021 में एक पेमेंट गेटवे जस्पे का 100 मिलियन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डिटेल्स और रिकॉर्ड्स लीक हो गई। अब ये लीक है कि जाने अनजाने में डेटा शेयरिंग है, ये फैसला मैं आप तक छोड़ता हूं, लेकिन आपको इस डेटा लीक का भुगतान करना पड़ता है, आपको उसको भुगतना पड़ता है। और उसका सबसे छोटा सा उदाहरण है कि आए दिन आपको आपके बीवी, आपके माता पिता, आपके घर वाले फोन करके आपका हाल पूछे ना पूछे, मार्केटिंग कॉल्स वाले आपको रोज फोन करके कहेंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया, आपका लोन अप्रूव हो गया, हमसे फ्लैट ले लीजिए, हमसे फलानी चीज ले लीजिए। इनके पास ये हमारा डेटा आता कहां से, एक बड़ा सवाल है। चौथी समस्या, हिडन चार्जेस और फीस। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से ये नाना प्रकार के चार्जेस जो आज मैं सदन में लाया हूं, ये माननीय वित्त मंत्री जी तक पहुंचे, ताकि देश के आम आदमी की जो जेब बैंकिंग सिस्टम काट रहा है, ये उसे पता लगे, ग्राहक को भी और माननीय वित्त मंत्री जी को भी। पहला, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी। यदि आप न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं तो 100 से 600 रुपए प्रति माह बैंक आपका काट लेता है। इस चार्ज को लगाने के बाद बैंकों ने वित्तीय वर्ष 22-23 में 3500 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के नाम से लोगों से वसूले हैं मैडम। दूसरा चार्ज, एक्स्ट्रा एटीएम यूजेज। आपको एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए 2 से 3 की मोहलत मिलती है, 2 से 3 की इजाजत मिलती है बैंकों द्वारा। अगर आप चौथा, पांचवा ट्रांजैक्शन कर लें तो हर ट्रांजैक्शन पे 20 रुपए एटीएम चार्ज आपको देना पड़ता है। इनएक्टिविटी फी 100 से 200 रुपए सालाना, यानी कि अगर बैंक आप बहुत ज्यादा अपना अकाउंट यूज नहीं करते हैं तो बैंक इनएक्टिविटी के नाम पे भी चार्ज लगा देता है। फिर बैंक स्टेटमेंट आप मंगवाते हैं तो बैंक स्टेटमेंट इशुएंस चार्जेस के नाम पर आपसे 50 से 100 रुपए लेता है। फिर आप कहते हैं हमें एसएमएस अलर्ट के माध्यम से मेरे बैंक के खाते में क्या आ रहा है उसकी जानकारी मिले, तो एसएमएस अलर्ट चार्जेस के नाम पर भी प्रति क्वार्टर 20 से 25 रुपए आपसे लिया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे एनईएफटी की तो ट्रांजैक्शन फी भी ली जाती है। जबरदस्ती आपको पहले लोन बेचते हैं और फिर उसके बाद लोन प्रोसेसिंग फी के नाम पर 1 से 3% लोन अमाउंट का काट लेते हैं। और जब आपकी किस्मत ठीक चल रही हो और आप समय से पहले अपना लोन बकाया जो है उसका भुगतान करने बैंक पहुंच जाएं तो लोन प्री क्लोजर चार्जेस, अर्ली पेमेंट पेनल्टी के नाम पर भी बैंक आपसे पैसा वसूलता है। साधारण सा सिग्नेचर बदलवाना हो, नॉमिनी की डिटेल्स बदलवानी हो, उस चेंज पर भी 200 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के नाम पे बैंक आपसे पैसा वसूलता है। और डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर बनाने जाएं तो 100 से 200 रुपए प्रति डिमांड ड्राफ्ट आपसे पैसा वसूलता ही वसूलता है। यानी कि कस्टमर्स की जेब काटी जा रही है और कस्टमर्स को पता भी नहीं लगता कि कितना पैसा बैंक इन नाना प्रकार के चार्जेस के चलते आम आदमी से वसूल रहा है। मेरा पांचवा और आखिरी पॉइंट मैडम, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मिस सेलिंग। अपने क्वार्टरली या मंथली टारगेट्स पूरा करने के लिए बैंक के एग्जीक्यूटिव मिस सेलिंग करते हैं, गलत प्रोडक्ट लोगों को बेचते हैं। यह भी एक प्रकार का हनी ट्रैप है। मीठी मीठी बातें कर कर भोले भाले मासूम लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स बेच दिए जाते हैं जिनकी जरूरत उन्हें है ही नहीं। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि 3.5 लाख सालाना कंप्लेंट्स में से 20% कंप्लेंट्स सिर्फ और सिर्फ मिस सेलिंग की, गलत प्रोडक्ट बेचने की उन्होंने दर्ज करी हैं। सेबी की एक रिपोर्ट बताती है कि 30% इन्वेस्टर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का शिकार हैं। और म्यूचुअल फंड्स की मदर बॉडी, जिसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, वो बताती है कि 23%, मैं खत्म कर रहा हूं मैडम, 23% इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनके पास वो प्रोडक्ट्स हैं जो उनके रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल से मेल ही नहीं खाते हैं। तो मैडम, मैं इन सारे जो समस्याएं बताई हैं उसके माध्यम से समाप्त कर रहा हूं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बड़ी बुनियादी समस्याएं हैं जो आज इस देश का एक आम अकाउंट धारक, एक आम आदमी सफर कर रहा है। मैं चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी इन बुनियादी सुविधाओं का, इन बुनियादी समस्याओं का समाधान दे। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री निरंजन बख्शी। माननीय सदस्य श्री निरंजन, सॉरी, माननीय सदस्य श्री मेधा रघुनाथ रेड्डी, आपके पास 6 मिनट हैं। मैडम, thank you madam, thank you honorable chairman madam. The banking sector in India has been growing at a stellar rate over the years, and I welcome this bill for its willingness to adopt
to the evolving needs for our times. However, I have certain specific comments I wish to raise about the banking sector in the context of Andhra Pradesh. Financial scams. Banking fraud cases in India surged 27% to 18,461 cases in the first half of the financial year 2024-25, compared to its previous level of 14,480 cases in the same period in the previous year, madam. The data also showed that the total amount involved increased nearly eightfold to 21,367 crore in the first half of the financial year 2024-25, compared to 2,623 crore in the same period last year, madam. Remedy. I remedy the house of the agri gold scam, where my party leader Jagan Mohan Reddy Garu took the unprecedented step of ensuring direct state intervention to support victims. 667 crore were released to over 10.4 lakh victims. It was the first time that the state government actively assisted those affected by the financial fraud, setting a strong precedent for the accountability and justice. I request the central government and all state governments to follow the pro-public example set by Jagan Mohan Reddy Garu and compensate victims through the state exchequer whenever possible. Credit for farmers and rural areas, madam. During his tenure as Chief Minister in 22-23, Jagan Mohan Reddy Garu authorized and announced a total outlay 3,19,480 crores in credits at the 219th State Level Bankers Committee SLBC meeting. Of this, 54% of loans were earmarked specifically for the agricultural sector. Throughout his tenure, bankers too instructed to redouble their efforts to lend more credit to support the downtrodden to withstand the pressure of the inflation. Farm mechanism, poultry and tenant farming were given special focus. Such a vision is lacking in the union budget's banking focus. The PM Kisan Samman Nidhi Yojana had a utilization of 63,500 crores, exceeding the initial allocation of the 60,000 crores in 2024. Yet the allocation has stagnated at 63,500 crores at again. The Deen Dayal Antyodaya Yojana, which intends to give credit assistance and interest subvention to rural women self-help groups, has an impressive increase from 15,047 crores to rupees 19,005 crores. Of the 40.6 crore women in rural parts of India, madam, we have only been able to cover around 8 crores so far. What is needed is a multiplication of these schemes, financial allocations, and not just marginal increase. Follow the Jaganji's example. Madam, I request the Finance Minister, madam, through you, madam, 5-day working week and social security for banking employees. Banks operate 6 days a week as per standard practice. Employees of the central government, Reserve Bank of India, Life Insurance Corporation like LIC enjoy a 5-day week work. With the 8th Pay Commission Constitution approved going by the Prevention Pay Commission, a fitment factor of over 2.57 is expected for central government employees. However, as per the December 2023 tripartite agreement between the Indian Banks Association and Banking Employees Unions, a mere 17% salary hike was agreed upon. This means that bankers get both lower salaries as well as have more working days when compared to their equivalent central government employees, madam. Likewise, in a employee association meeting of retired SBI staff at Andhra Pradesh from Tirupati, Kakinada, Vijayawada, Guntur and Rajahmundry, the hardships of retired banking employees with the insufficient pensions was highlighted, madam. I request the minister to look into this urgently
along with the reduction of the number of working days for the banking employees. With these suggestions, I support the bill, madam. Thank you, madam. धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री निरंजन बीसी, आपका समय है 6 मिनट। Thank you, Deputy Chairman, Madam. I am thankful to you for giving scope to speak on the Banking Laws Amendment Bill 2024, which seeks to amend the critical legislation governing the banking sector, including RBI Act, Banking SBI Act, Reserve Bank of India Act, and the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1970 and 1980. While the bills aims to modernize and streamline banking regulation, it has to ensure the safeguards of poor customers, women customer, farmer customer, ST/SC customer. First of all, I would say that this bill has limited focus on public sector banks, which form the backbone of our financial ecosystem, particularly in villages and semi-urban areas. The bill does not address the problem like high non-performing assets, lack of digitization, and declining market share. By amending the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1970 and 80, the bill strengthens the way to further privatization of public sector banks, which goes against the people of our nation and against the employees of banks and ST/SC communities. Because if the nationalized bank will be privatized, then the private bank, the microfinance company, the private finance institution will exploit the customer by levying 36% interest upon the customer. Madam, secondly, a growing concern is the alarming rise in digital frauds, which are causing significant financial loss to individuals across the country. With the rapid adoption of digital banking, cyber criminals are exploiting gaps in cyber security, targeting unsuspecting customers through phishing, identity theft, and online scam. Reports indicate a surge in cases where hard-earned savings are wiped out due to inadequate protection and customer awareness. The bill, however, substantial robust provision to address this pressing issue. Strengthening cybersecurity frameworks, mandating advanced fraud detection system, and ensuring timely customer redressal are critical steps that must be incorporated. Public awareness campaign on digital safety should also be emphasized to protect consumers from cyber robbery. मैडम 2021 से 2024 तक 30,05,000 कंप्लेंट्स हुआ है जो साइबर क्राइम का, और उसमें से 27,09,14 करोड़ रुपया जो कंज्यूमर का, कस्टमर का, स्टेक होल्डर का लॉस हुआ है। पहले जो चोरी डकैती होता था ट्रेजरी का और अलमीरा का, घर का तोड़ फोड़ के चोरी करते थे। अभी साइबर क्राइम में पुअर टू रिच, ऑफिसर टू लेबर, सब का ये साइबर क्राइम में, साइबर फ्रॉड में, ऑनलाइन में सब चोरी डकैती होता है। और जो गरीब का मेहनत, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को शादी के लिए वो पैसा इकट्ठा करते हैं, सेविंग करते हैं, वो 27,914 करोड़ जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का बजट है, एक साल का बजट है एक डिपार्टमेंट का, एक मिनिस्ट्री का, तो इतना पैसा देश का 27,914 करोड़ बैंक रॉबरी हुआ है, साइबर रॉबरी हुआ है। तो उसको ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करना है और ये बैंक सिटीजन्स डाटा जो है उसको सिक्योर करना है। देश का, हमारे देश में अभी तक 1,65,501 शेड्यूल कमर्शियल बैंक ब्रांच है और हमारे देश में 2,55,536 ग्राम पंचायत है। तो 90,035 ग्राम पंचायत को अभी में देश में नहीं है बैंक फैसिलिटी हमारा कस्टमर्स को। और हमारा ओडिशा में 6,794 ग्राम पंचायत है,
उसमें से 2012 बैंक ब्रांच है, तो 4782 ग्राम पंचायत में अभी भी बैंक का ब्रांच नहीं है। तो जो गांव के गरीब, गांव के किसान, गांव के महिला, गांव के युवा, उसके लिए ये बैंक फैसिलिटी नहीं मिलता है। तो अगर गांव के लोगों को, गांव के गरीब किसान महिला को नहीं मिलता है बैंक सर्विस, तो वो कैसे सेविंग करेंगे, कैसे लोन लेंगे? और खाली अर्बन एरिया में अगर बैंक का ब्रांच होगा, अर्बन एरिया के लोग कस्टमर लोन लेंगे, तो ये जो गरीब है, महिला है, किसान है, वो कैसे बैंक से लोन का सुविधा मिलेगा उसको? तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? तो इसीलिए प्रत्येक हर ग्राम पंचायत में एक एक बैंक का ब्रांच होना चाहिए। और ओडिशा के बारे में मैं बोलता हूँ, इन ओडिशा farmers and MSME entrepreneurs struggle to access timely credit and insufficient infrastructure such as branch closure and limited ATM, which escalate financial exclusion. To address this concern, the bill should prioritize strengthening public sector banks through recapitalization and operational improvement, mandate expanded banking services to deprived areas, and include robust cyber security framework. Please conclude. Thank you. धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर एम तंबी दुरे। Honorable Vice Chairman, 4 minutes. Honorable Vice Chairman, Madam, on behalf of my party, ADMK party leader, Sri Edappadi Palaniswamy, I rise to speak on the banking law, which seeks to amend 5 laws. Madam, just now, ADMK member, DMK member, accused our ADMK party. I want to answer first for that. Madam, during the DMK regime only, there are a lot of scams in the cooperative banks. Many criminal cases are pending on the DMK members, but he is accusing us. Secondly, Madam, they gave wrong promises to the public in election manifesto regarding the banking loans. Because coming to the students' welfare and farmers' welfare, I would like to draw attention of the House. The false promises made the DMK in the election manifesto 2021 Assembly and 24 Lok Sabha election. They promised that agricultural loans, agricultural gold loans can be taken by marginal farmers from cooperative banks will be waived off. They have not waived off. Promised farmers will be given interest-free loans. They are not given. They promised giving the free loan, but they are not given. माननीय सदस्य कृपया आप विधेयक पर ही बोलें। बैंक लोन समझे कृपया आप विधेयक पर ही बोलें। मैडम, आप बैठ जाएं। मैडम, they said आप विधेयक पर ही बोलें माननीय सदस्य। students bank loan, they are going to waive. अपनी सीट पर बैठ जाएं, बोल रहे हैं। They said on the students bank loan. They never gave. They said all promises they given. Because माननीय सदस्य कृपया आप बिल पर ही बोलें। आप बैठ जाएं, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, बैठ जाएं आप। मैडम, आप बैठ जाएं, माननीय सदस्य बैठ जाएं। प्लीज सिट। आप बोले माननीय सदस्य। Madam, he spoke about the ADMK party. That is why I am replying for that. Because DMK party gave the false promises to the students, waiving the loan, study loans. If they waived the loans, get them to answer. Like NEET examination, they are going to abolish. They are not abolished. The same way, they misled the whole students, thinking they are waiving the loans of the studies, they have not done. The same way, they asked the farmers to draw the loan, putting the jewels and everything in the bank. Poor people, believing the DMK people, promised they borrowed the loan. They will not give. They poor agriculture family members, all the families are suffering. माननीय सदस्य, इस संदर्भ में नियमों के अंतर्गत मैडम जांच की जाएगी। आप बैठ जाएं, माननीय सदस्य।
आप बैठ जाए। आप कृपया बिल पर ही बोले माननीय सदस्य। No. I am not misleading. नियमों के अंतर्गत ही इसका आकलन किया जाएगा। No. यदि कोई You only. असंगति होगी तो वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। Madam, why you spoke about ADMK party? माननीय सदस्य आप बैठ जाएं। DMK member had to speak. ADMK. इस संदर्भ के नियमों के अंतर्गत ही I have a right to speak here. आकलन किया जाएगा। Farmers on the chicken. यदि कोई They are not असंगत paying the होगी loan. तो वो रिकॉर्ड That में is नहीं the जाएगा। कृपया आप बैठ fact. जाएं। माननीय सदस्य आप बैठ जाएं। आप बोलें माननीय सदस्य आप बोलें। Madam, I want. And also. प्लीज प्लीज। This is the subject. This is the bank loan is the subject. Which DMK government failed to fulfill the promise, the formats and students. That is the bank loans I'm telling. The cooperative bank is said, cooperative bank scandals that took place more in the DMK period. That is the fact. Friend, many criminal cases are pending. धन्यवाद। Thank you. माननीय सदस्य श्री मिलिंद मुरली देवड़ा, आपके पास 8 मिनट समय है। प्लीज। इनका टाइम बीजेपी का। मैडम, मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को, सरकार को, हमारे राज्य मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल लाया है। These amendments are very timely because in many cases they are modernizing provisions that are almost 75 years old. मैं आज बहुत ही कॉन्फिडेंस, विश्वास और गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस सरकार के उपलब्धियों में से एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम उपलब्धि है कि आज पिछले 10 वर्षों में हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पूरी तरह से क्लीन अप हो चुका है। बहुत बड़ी बात। 2018 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एनपीएस का परसेंटेज ऑलमोस्ट 15% हुआ करता था। सितंबर 2024 में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर ओनली 3%। इसके साथ साथ लास्ट ईयर सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मिलाकर उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया है 1.41 लाख करोड़ रुपीस। एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल अर्न almost 1.5 lakh crore rupees of net profits. This is unprecedented, and I congratulate the government. I congratulate Prime Minister, the Finance Minister for very, very bold reforms to achieve this objective. इसके साथ साथ हमारे पीएम जनधन अकाउंट्स 2014 में जो एवरेज बैलेंस है, 2014 की एवरेज बैलेंस 1065 रुपीस हुआ करता, आज 2024 में 4400 रुपीस एवरेज बैलेंस है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बिल में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है जो मैंने कहा है कि 75 इयर्स की जो एक प्रकार से इस सेक्टर को नजरअंदाज, इग्नोर किया गया। One good initiative is to increase the tenure of directors of cooperative banks from 8 years to 10 years. The MOS of this ministry is sitting here. I would suggest that there are many kinds of banks in this country. There are cooperative banks, there are scheduled commercial banks, there are SFBs, which are small finance banks, which RBI is giving licenses to. It will be a good suggestion to have uniformity across banks in terms of the tenure of the directors. This will bring governance standards in alignment with the Companies Act. An outdated provision of the 1949 Act limited MDs and EDs. EDs means executive director, not the other ED. MDs and EDs of banks to own only 5 lakh rupees worth of shares in other companies. This has been increased to 2 crores. I commend the Finance Ministry for addressing what was a very long overdue issue
which successive governments should have considered in the last 75 years. I'm coming to you, Jairam. Another very progressive reform, which is a very important reform. जब लोग बैंक अकाउंट खोलते हैं, they are allowed to nominate only one nominee. This bill provides for a depositor to nominate 4 people, which gives a lot of flexibility to the depositors, and I congratulate them. Few suggestions that I have more than a speech. मैंने small finance banks को highlight किया है. The last few years में small finance banks have done very well for this country. They are mandated to open 25% of their branches in rural, unbanked areas. In the last few years, 2016 to 21, small finance bank branches have increased from 415 to 5,107 branches. Their deposits have increased by 32% in the last 3 years from 2020 to 2023. But there are some discrepancies between small finance banks and between scheduled commercial banks. The small finance banks, their priority sector lending is 40% of adjusted net credit banks. For scheduled commercial banks, for SFBs, that's 75%. Similarly, CRAR for SFBs is 15%, whereas for other banks, it's 11.5%. I think it's time to align the CRAR and priority sector lending between small finance banks and scheduled commercial banks. एक बहुत ही significant change जो आज हमारे देश में underway है. 2014 में और 2014 के पहले भारत को कहा जाता था कि भारत एक it is a nation of savers. Today, under the reforms of this government, India has become a nation of investors. One startling statistic, very important statistic. In 2014, the assets under management of mutual funds were less than 10% of bank deposits. Today, they are 31% and steadily growing. While this is a good trend, I come from Mumbai, this is a good trend. It's deepening our capital markets. It's reducing our dependence on short-term foreign inflows. It's also creating one concern and one challenge for all banks, whether it's PSUs or private sector banks. As more capital is moving towards equity markets, banks are finding it increasingly challenging to retain depositors and to attract new depositors. I have few suggestions to ensure that we can retain the depositors that banks have and attract depositors. There's no question that banks cannot make current and savings accounts as competitive as other products and other asset classes that are out there. But for instance, आज यदि एक investor, आम investor है, वो यदि एक debt mutual fund में invest करता है, तो debt mutual fund attracts a tax only upon redemption of that debt mutual fund, not on accrual of interest. But if a depositor invests in a fixed deposit, that tax is accrued and charged upon accrual of interest, which is very different. If the government brings these in alignment, it will make fixed deposits. Maybe you can do this for a tenure of only 5-year fixed deposits. It will make fixed deposits as competitive as debt funds and will allow banks to retain depositors, to attract new depositors who are otherwise moving towards other asset classes to invest their money. And why is this important? Because today, if banks are flushed with funds, they can lend to MSMEs, which account for 45% of India's manufacturing. And the more banks have money, the more that they can lend at cheaper rates and fuel India's economy. Another very, very serious challenge before banks, public sector and private sector. मैंने कई बार इस सदन में अपने भाषण में कहा कि UPI भारत के लिए नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. कुछ महीने पहले, I think December or January, in 1 month, India recorded a historic 17 billion transactions under UPI. But today, UPI's main 2 companies that are running on UPI platforms are GPay
माननीय Madam, I have- सदस्य प्लीज मुझे टाइम है, मुझे उन्होंने मुरुगन जी ने मुझे समय दिया. 5 मिनट ठीक. So one suggestion on UPI, the companies that are running on UPI's platform today, who have 90% market share, are PhonePe and GPay. PhonePe is owned by Walmart, GPay is owned by Google. Means 90% of UPI, while we are proud of UPI's success, 90% of UPI are run by American companies. One thing is very clear, while UPI has done very well, it also shows that our banks, public sector and private sector, are not innovating enough. One suggestion I would give to the finance ministry, we have to encourage innovation in our banking system. Banking system को हमें disruptor बनाना है. If we don't innovate efficiently, the banking sector can be disrupted by new technologies. आज एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर DeFi, decentralized finance पे चर्चा हो रही है. Embedded finance. These are future technologies which are circumventing banks and allowing people to borrow, lend directly without banking intermediaries. US सरकार ने अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उन्होंने भी इस डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, खास करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वे एक प्रकार से बहुत एनकरेज कर रहे हैं. मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे भारतीय बैंक्स को भी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वी मस्ट एनकरेज इनोवेशन, बी ओपन माइंडेड. एम्बेडेड फाइनेंस ऑल्सो एक बहुत बड़ी एक नई ट्रेंड है हमारे देश में. एम्बेडेड फाइनेंस मार्केट is about $6 billion today, expected to be $30 billion by 29. Embedded finance means ओला जैसे कंपनी है, Amazon जैसे कंपनियां हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म्स पर ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इससे होता क्या है कि बैंक्स की जो विजिबिलिटी है वो कस्टमर के दिमाग में कम होती है. So we have to encourage innovation in the banking sector, especially when it comes to DeFi, especially when it comes to embedded finance, if we want to be disruptors and not be disrupted. But since my dear friend Mr. Jairam Ramesh raised one point, I would like to say one more achievement. मैंने कहा कि one very big achievement of the government is to clean up the banking sector. The second very big achievement of the government, especially when it comes to banking, is that there is a convergence between what the finance ministry is doing and what the environment ministry is doing. I would like to quote someone: corruption and delayed planning permits or land and environmental clearances under the UPA government contributed to the buildup of non-performing assets post the global financial crisis on Indian banks. These are not my words. These are the words of Raghuram Rajan. Raghuram Rajan said that the environment ministry, finance ministry used to work in different directions. Today Mr. Jairam Ramesh and Mr. Chidambaram sit close to each other. One was the former finance minister, one was the former environment minister. But still, you have a lot to answer for that. So what I would like to say, please don't talk about shame. The derailing of the banking sector, which led to NPAs, was a direct result of this divergence. And today I congratulate the government and the Prime Minister for converging. What the Prime Minister says is a national priority. Every ministry takes part and plays towards that agenda. That's very, very critical for us to grow. I would only say in conclusion that these amendments are very timely. In many cases, they are reversing 75 years of successive governments that they have overlooked. It's a very positive thing. I think that these will make our banking sector, our financial sector, public sector banks, private sector banks far more competitive, not just in India, but globally. I thank the government and congratulate the government for this decision. Thank you. धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री संजय सेठ, 15 मिनट हैं आपके पास. संजय सेठ है ना? संजय सेठ जी, उपसभापति जी,
आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैंकिंग के इस कानून संशोधन बिल में 7 कानूनों में बदलाव आया है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में आधुनिक, ट्रांसपेरेंट और रिफॉर्म बनने में मदद होगी और बैंक अपनी दिशा बदलने में कामयाब होंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में सरकार बनाई थी, उस वक्त हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें नंबर पे थी। आज अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है और हमारे प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि अगले 5 सालों में हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन के उभरेंगे। और ये कदम जो बैंकिंग के संशोधन हैं, ये इस कार्य को पूरा करने में मदद करेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत बनाने के लिए उनका जो कमिटमेंट है, उसको पूरा करने के लिए इन संशोधनों को लाया गया है। इस विधेयक के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 और 1980 में अमेंडमेंट लाया गया है। उपसभापति जी, जो पहला संशोधन है वो हम लोगों की जो डाटा की रिपोर्टिंग होती थी बैंकों की, वो हर लास्ट फ्राइडे को होती थी। अब उसको 1 से 15 तारीख के बीच में जो होगा उसके लास्ट फ्राइडे को, और 15 से 30 में जो लास्ट फ्राइडे होगा उस पे होगा, जिससे कि ये हमारे जो डाटाज हैं ये पूरी तरीके से एक अच्छी तरीके से सबके सामने रखे जा सकेंगे। दूसरा संशोधन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 5 NC में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की परिभाषा को संशोधित करता है। इसमें वर्तमान में 5 लाख की सीमा को 2 करोड़ रुपए की सीमा चुकता पूंजी का 10% बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे पारदर्शिता, सुरक्षा सुनिश्चित होगी और हितों के टकराव को कंट्रोल किया जा सकेगा। तीसरा अमेंडमेंट धारा 10A में तहत कोऑपरेटिव बैंक्स में डायरेक्टर का कार्यकाल को 8 साल से बढ़ाकर 10 साल किया गया है, जिससे व्यावहारिक समस्याएं जो आती हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। जो हमारे यहाँ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं उसमें 28% की बढ़ोतरी हुई थी। मार्च 2023 में इस तरह का अनक्लेम्ड पैसा बैंकों में करीबन 42,272 करोड़ रुपया था। इसका मेन कारण यह था कि उत्तराधिकारी जो होते थे वो ठीक से नहीं हो पाते थे, उनको रुपया नहीं मिल पाता था। तो इस संशोधन के द्वारा हम लोगों ने 4 लोगों को नामित करने की एक सुविधा दी है, जिससे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को वो ले सकेंगे, चाहे वो लॉकर के अंदर पैसा हो, चाहे वो अकाउंट के अंदर पैसा हो, तो उनको ये एक बहुत बड़ी सुविधा इसके थ्रू मिलेगी। चौथा संशोधन धारा 16 में कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जो डायरेक्टर्स हैं उनको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड में कार्य करने की अनुमति दी जा रही है। यह सरकारी सहकारी बैंकों के संघीय ढांचे को प्रभावशीलता सुनिश्चित करेगा। एक संशोधन बैंक्स को स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को रेम्यूनरेशन के निर्धारण का अधिकार प्रदान करता है। इससे बैंक को गुणवत्ता युक्त ऑडिट सर्विसेज मिल सकेंगी। जो बैंक्स चाहेंगे अच्छे ऑडिटर्स को ले सकेंगे, उनको पैसा उस तरीके से दिया जा सकेगा। ये सभी प्रावधान जो हैं बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाएंगे। 2014 में जब
प्रधानमंत्री जी ने ये सरकार बनाई थी तो उनको सबसे बड़ी एक समस्या जो मिली थी वो बैंकिंग सेक्टर की मिली थी। सबको मालूम है कि 2014 से पहले राजनीतिक दबाव के अंदर आयोग व्यवसायों और अपने चहेते पूंजीपतियों को बैंकों पे फोन करके लोन दिए जाते थे, जिसका न कोई रिस्क असेसमेंट होता था, न ड्यू डिलिजेंस होती थी। और इसका उदाहरण विजय माल्या, नीरव मोदी, मोहिल चोकसी और कई सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंकों का रुपया हड़प रखा है। इसका ये परिणाम हुआ कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो पूरी तरह से चरमरा गई और सच्चे व्यापारी को न ऋण मिल पा रहा था और बैंकिंग सेवाओं को केवल 53% लोगों तक ही सीमित रह गई थी। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग निजी साहूकारों से बड़े ही ऊंची ब्याज पे रुपया लेते थे। इसके लिए पूर्व आरबीआई गवर्नर ने भी ये माना है कि यूपीए के भ्रष्टाचार ने ही एनपीए की समस्या को जन्म दिया था। लेकिन मोदी जी की सरकार ने सिर्फ नारे नहीं दिए बल्कि एक्शन लिया और 3,20,000 करोड़ रुपया बैंकों में डालकर इसको दोबारा जिंदा किया। हमारी सरकार ने 4R की रणनीति रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म की नीति अपनाई है। एसेट क्वालिटी रिव्यू के जरिए छिपे एनपीए जो थे वो उजागर किए गए हैं और उन्हें छुपाने की जो चालें थी उनको खत्म किया गया है। इसका परिणाम यह है कि आज बैंकिंग सेक्टर स्वस्थ, प्रोफेशनली मैनेज्ड और आर्थिक रूप से सक्षम है और बैंक आज रिकॉर्ड प्रॉफिट कमा रहे हैं। पिछले 10 सालों में 10 लाख तक के लोनों में 238% व 50 लाख के लोनों में 300% की वृद्धि हुई है। इससे छोटे व्यापारी और एमएसएमई सेक्टर को सशक्त किया गया है। हमारी सरकार ने बैंकों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें एक आईबीसी कोड है जिसमें खराब ऋणों को तेजी से वसूली की जा सके, इसका प्रावधान है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बैंकों ने वापस मिली है। उपसभापति जी, सबको ज्ञात है कि बड़े और डेवलप बैंक देशों में बैंक किस तरीके से डूबे और लाखों लोगों का धन उसके अंदर फंस गया, खत्म हो गया। परंतु हमारे देश के बैंक मजबूती के साथ इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं और लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसके लिए आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा। उपसभापति जी, जब कोरोना का वक्त था उस वक्त सारे विश्व की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी, परंतु हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी अर्थव्यवस्था को न केवल संभाला बल्कि उसको आगे बढ़ाया और उसके लिए बैंकों से जो बिजनेस कर रहे थे उन सबको एडिशनल लोन दिला के उनके बिजनेस को चलाया कि जो उनको पूंजी की जब भी जरूरत हो वो उसमें से निकाल के अपने व्यवसाय को चला सके। और यही उसकी वजह है कि आज हमारा देश बैंकिंग में, इंडस्ट्री में, बिजनेस में बहुत आगे चल रहा है। उपसभापति जी, आज इन सुधारों के परिणाम स्वरूप भारतीय बैंकिंग क्षेत्र मजबूत और स्थिर है। 2014 से 2024 के बीच बैंकों की जो शाखाएं, अभी एक माननीय विपक्ष के सदस्य बोल रहे थे कि बैंकों के अंदर बड़ा मिसमैनेजमेंट है, तो उनकी शाखाएं 1,17,900 थी
जो अब बढ़कर 1,65,000 हो गई हैं और ग्रामीण शाखाओं की संख्या 41,855 से बढ़कर 55,372 हो गई हैं। इसी तरह सेमी अर्बन शाखाएं 32,504 से बढ़कर 45,314 और अर्बन शाखाएं 21,007 से बढ़कर 29,276 हो गई हैं। ये विस्तार ग्रामीण और शहरी भारत के वित्तीय समावेशन को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आज रिकॉर्ड 53 करोड़ अकाउंट खुले हुए हैं, जिनमें कुल 2,37,000 करोड़ रुपया जमा है। इसमें पहले 2015 में जो औसत बैलेंस 1,065 रुपए का था, अब वो 4,397 रुपए का एवरेज बैलेंस हो चुका है। महिलाओं और छोटे व्यापारियों को पीएम मुद्रा और पीएम समृद्धि योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं, जिससे छोटे ठेले वाले, खोमचे वाले, इन सबको उसका लाभ मिल रहा है। और उसमें से 68% मुद्रा लोन जो है वो महिलाओं को दिए जा रहे हैं। आज हमारा देश के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा हो रहे हैं, विश्व में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। एक छोटे से भी ठेले वाला अपना एक स्कैन करा के अपना सामान बेच सकता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की। और हमारे रुपे का जो कार्ड है वो प्रधानमंत्री जी ने उसको यूएई के अंदर भी चलवाया है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपसभापति जी, मैं यूपी से आता हूं। वहां डबल इंजन की सरकार के तहत रिकॉर्ड विकास हो रहे हैं और आज यूपी की अर्थव्यवस्था 27.5 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। तो यूपी की बैंकिंग की जो व्यवस्था है उसमें शानदार प्रगति हुई है। 2017 में बैंकों का कारोबार 12.3 लाख करोड़ रुपया था, जो आज 29.66 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। और हमारे प्रदेश का सीडी रेशियो 46% से बढ़कर 61% हो गया है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग देश का नंबर 1 राज्य बन गया है और जिसकी हिस्सेदारी 16.2% है। आज यूपी में 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का लोन दिए जा चुके हैं। उपसभापति जी, एमएसएमई क्षेत्र के लिए पहली बार सरकार ने कोलेटरल फ्री लोन्स की सुविधा दी है, जिसमें प्लांट और मशीनरी खरीदने में बहुत मदद मिल रही है। इसके साथ साथ एजुकेशन लोन्स के भी 2017-18 में 71,000 करोड़ रुपए से जो बढ़कर अब 2024 में 1.3 लाख करोड़ रुपया हो गया है। एजुकेशन लोन में भी 7.5 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी कोलेटरल और मार्जिन मनी के लिए दिया जा रहा है। ये शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है कि हमारा पूरा देश शिक्षित हो, अपने हाथों पे खुद काम कर सके। किसान का जो क्रेडिट कार्ड है उनकी संख्या 2013 में जो 6,46,000 करोड़ थी, वो अब बढ़कर 7,75,000 करोड़ हो गई है। और इन खातों में आज जो ऋण के अमाउंट है वो 3,63,000 करोड़ रुपया है से बढ़कर अब 9,81,00,000 करोड़ रुपया हो गया है। अटल पेंशन योजना में भी 7 करोड़ ग्राहक हैं, जिसमें 47% महिलाएं हैं। आज बैंकिंग सेवाएं देश के हर कोने में पहुंच रही हैं और ये उपलब्धियां
इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र को सही दिशा में आगे बढ़ाया है। माननीय सदस्य प्लीज कंक्लूड। मैं इसी के साथ इस संशोधन का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रमोद तिवारी जी, 11 मिनट है आपके पास। 12 11 मिनट है। माननीय सभापति जी, मैं आभारी हूं आपका। मैं इसे देख रहा था बहुत देर से, एक्ट जो संशोधन लाए हैं, इसमें मेरी समझ में नहीं आया और एक ही बात समझ में आई कि सरकार की ना नीति दुरुस्त है और नीयत तो आदतन खराब है इसके पीछे इनका इरादा किसी तरीके से 51% जो सार्वजनिक उद्योग में होना चाहिए उसको कम करना है। यानी फिर ये जो बैंक की शुरुआत हुई थी इंदिरा गांधी जी के जमाने में, ये समझ में नहीं आएगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मैं फिगर दे रहा हूं, अगर किसी में हिम्मत है तो अपने जवाब में काट देगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1962 में एसबीआई के 7 सहायक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में रह कितने गए हैं? 12। अब इस फिगर को बता दें अगर गलत हो तो। मैं कहना चाहता हूं 2021 तक कुल 27 छोटे आकार के सहकारी बैंक का लिक्विडेशन किया गया, जबकि 42 सहकारी बैंक विलय के कारण बंद हो गए। 2018 से दिसंबर 2012 तक लिक्विडेशन के अधीन बहुराज्य सहकारी बैंक की संख्या 5। पिछले 10 वर्षों में 2021 तक कुल 91 बैंक मुख्य रूप से सहकारी बैंकों का लिक्विडेशन, एकीकरण और पुनर्गठन किया गया। और एक जो किसी को भी तकलीफ देगी, 26 सार्वजनिक बैंक की 3400, थोड़ी बहुत नहीं, 3400 ब्रांचेज बंद कर दी गई। तो मैं इस पे नियत पे शक नहीं करूं तो क्या करूं? ये जनता को सुविधा देने के लिए कि जनता की सुविधा छीन लेने के लिए है? इनमें से 75% प्रभावित शाखाएं जो बंद हुई हैं वो स्टेट बैंक की। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय महिला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक मैसूर, स्टेट बैंक पटियाला, स्टेट बैंक तामिलकोट 1 अप्रैल को विलय कर दिया गया। 2019 में विजया बैंक और देना बैंक को भी विलय कर दिया। फिर एक चीज और आ जी, कर्ज माफी। 2 वर्ग हैं, एक बड़े बड़े पूंजीपतियों जिनके सहारे बैठी सरकार चल रही, जो चला रहे हैं सरकार को, और एक किसान। मैं दोनों को कंपेयर किए देता हूं। 2014 में आपने किसानों के कर्ज माफी की बात की और कुल 1,59,590 करोड़ रुपए राज्यों ने माफ किए और कहा 2,25,000। जब वित्त मंत्री जवाब दें तो मेरे आंकड़े सही हैं कि उनके सैकड़े हैं, बता दें। अब मेरा एक सवाल है जिसको मैं बहुत चुनौती के साथ कहना चाहता हूं। 16 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ थोड़ा बहुत नहीं, ये माफ हुआ है। अच्छा है हम सदन में बैठे हैं, किसी गली में नहीं बैठे। श्रीमान 16 लाख करोड़ बट्टे खाते के नाम पर माफ किया गया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि किसान का नाम ले ले, किसका माफ किया, और अगर हिम्मत है तो आज इस एक्ट को पास कराने के पहले 16 लाख करोड़ जो बट्टे खाते में डाला गया, किसका डाला गया उसका नाम बता दें। मेरी चुनौती है, नहीं बता सकते क्योंकि मालिक लोगों का है,
मालिक लोगों के सामने इनकी जुबान नहीं खुल सकती। मैं फिर चुनौती दोहराता हूं, 16 लाख करोड़ किसका माफ हुआ है बता दें, और हम गर्व से कह सकते हैं कि 70,000 करोड़ हमने अपनी सरकार में किसानों का माफ किया था, कर्ज माफी की थी, और आपने एक पैसा नहीं किया। फर्क सिर्फ इतना है कि किसान का अगर कुछ बकाया है तो जेल में है, और बड़े मित्र का बकाया है तो उसी हवाई जहाज में बैठ के साथ अमेरिका जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है। कर्ज माफी के 2 सेक्शन है। मैं कहना चाहता हूं, इतना ही बता दें, अभी हाल में किसी को नहीं बख्शने वाली सरकार ने 200 करोड़ रुपए किसका माफ किया है, ये बता दें, वरना हम बता दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जुर्माना हुआ था पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए, यानी पर्यावरण के गुनहगार का भी आप माफ कर देंगे, मालिक है तो दुम तो हिला नहीं। मैं फिर एक बार आपके माध्यम से चुनौती देता हूं कि 16 लाख करोड़ जिनके बट्टे खाते में डाले गए उनको बता दीजिए आप। अब तो देश में जो बदनामी थी, अब तो विदेशों में भी इस बात की बदनामी। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे सवाल पूछा गया कि $265 मिलियन रिश्वत देने का आरोप किस पर? हिम्मत नहीं पड़ी। माननीय सदस्य, आप बिल पर ही बोले, कटाक्ष ना करें, बिल पर बोले। जब बिल पे तभी बोलूंगा जब बैंकिंग की कार्य पद्धति पर बोलूंगा मैडम, और बैंकों की कार्य पद्धति पर नहीं बोलूंगा तो बैंकिंग पे क्या बोलूंगा? प्लीज, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, तो अब तो बदनामी अमेरिका तक पहुंच गई है, सारे दुनिया ने देखा। अब ये FBI के छापे, FBI सबको मालूम है किसकी एजेंसी है, न्याय विभाग की जांच, सब कुछ मालूम है, लेकिन बोल नहीं सकते। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि एक तरफ यह हालत है, और दूसरी तरफ जो किसान आत्महत्या कर रहा है, शर्म आनी चाहिए। जो किसान आत्महत्या कर रहा है, 80% किसान वो आत्महत्या कर रहा है जिसने कर्ज इनका नहीं चुकाया है। 80% आत्महत्या करने वाले किसान वो है। 58% मेरा फिगर है, मैं आपके माध्यम से दे रहा हूं, बता दें मुझे गलत है। 58% किसान कर्ज के बोझ से दबा है, और 47,000 रुपए कर्ज प्रति किसान पर है। सवाल सिर्फ इतना है कि ये देश बेच रहे हैं और हमने किसानों का कर्जा माफ किया, फिर भी बेशर्मी की हद है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, आज की बैंकिंग प्रणाली समाज के वंचित रूप से काम नहीं कर रही है, शाखाएं बंद हो रही, बैंकों के KBC का नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीजें हैं। कारपोरेट में जो टैक्स की छूट दी जा रही है, 2019 में सार्वजनिक निगमों को 3.4 लाख करोड़ बचत की है, जबकि कटौती के माध्यम से 8.22 लाख करोड़ अधिक हो गए। ये टैक्स छूटने इसको बढ़ावा दे, पर इसका एकमात्र परिणाम बड़े व्यवसायियों की जेब भरना था, ये फिगर है। ऋण माफी जानबूझकर चूक करने वाले, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, वो मेहुल भाई, वही मेहुल भाई। मैं इतने कहना चाहता हूं, अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 5 साल में बैंकों ने 9 करोड़ 90 लाख की बड़ी धनराशि 9 लाख करोड़ ऋण माफी में डाल दिया है। जनधन खाते 20% बंद हो गए, फिर भी शर्म नहीं आती। बड़ा अच्छे है, ठीक है। आपने 10 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने अभी तक किसानों की कोई कर्ज माफी नहीं की। सरकार फसल खराब होने पर सूखे कर्जों किसानों की आत्महत्या कर रही है। आम जनता से भारी जुर्माना वसूल जाना, आम जनता को जुर्माना वसूल रहे।
पिछले 5 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में न्यूनतम बैलेंस न बनाए जाने के लिए आम आदमी से 8,495 करोड़ रुपए का जुर्माना आम आदमी से वसूला गया और बड़े लोगों को उपकृत किया गया। केंद्रीय सहकारी बैंक के निर्देशकों को राजकीय सहकारी बैंकों के बोर्ड में सेवा देने की अनुमति केंद्रीयकरण और सहकारी संघवाद को कमजोर करने के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। क्यों? मेरे दोस्त बोल के गए हैं अभी। अब केवाईसी, बार बार केवाईसी अपडेट का समाधान नहीं किया जाता है। मैं अगर कहूं कि देश के तीसरे वैश्विक, अभी भी नाम लेने से बच रहा हूं और आप बोलेंगे तो मैं ले लूंगा, पर घरेलू बैंक और एनबीएफसी का कर्ज बढ़ गया है। ग्रुप के कुल कर्ज में उनका हिस्सा आपके कार्यकाल में 36% पहुंच गया है। 31 मार्च 24 तक इस ग्रुप पर 2,41,394 करोड़ रुपए का कर्ज था। बढ़कर 31 मार्च तक वो संख्या अब 36 पहुंच चुका था, घट के 31 पे आ गया। तो कहीं तो एक हद होगी कि गरीब अगर पैसा न चुका सके किसान तो उसे जेल। और जब इनके 2-3 जिनके सारे इनकी सरकार चल रही, देखिए मैंने कहा ना नाम ले लूंगा, चुप हो गए। हिम्मत ही नहीं इनकी हिम्मत ही नहीं है कि उसका नाम आने दे। तो मैं सिर्फ इतना कह के आपसे विदा लूंगा। ये सरकार बिकी हुई सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, ये किसानों के खिलाफ है। और इधर जो इंदिरा गांधी ने सपना देखा था वो किसानों का था, आम आदमी का था। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बर्दाश्त किया। धन्यवाद। श्री हारिस बिरान, माननीय सदस्य श्री हारिस बिरान, थैंक यू। आपके पास 3 मिनट है। थैंक यू मैडम। Madam, there are 5 acts which have been amended in a single stroke. Now, whether this is a fair legislative practice to amend 5 separate acts in a single stroke, I think this House has to ponder over it. Now, Madam, I have got certain issues and concerns with regard to this particular bill. Firstly, Section 16 of the Banking Regulation Bill that proposes amendment to allow directors of the central cooperative banks to also serve on the state cooperative boards. Now, Madam, this raises severe concerns with regard to governance. This also raises potential conflict of interest because this is a double role for a director. He can be a director in the central board as well as the state board. This also has an increased risk of mismanagement, Madam. And this may also compromise the autonomy of the state cooperative banks. And there is no clear justification as to why this has been introduced in this new bill. It is against the spirit of the cooperative movement, and I urge the finance minister to delete this provision about Section 16. Now, secondly, on the cyber security and banking fraud. Now, this is a household name now. The banking fraud is a household name. Every second person is affected by banking frauds. But this bill does not make any mention about the cyber security and banking frauds, which is implemented in the public sector bank. Madam, there are specific challenges in safeguarding the financial data against the cyber threats. Ma'am, just 2 or 3 statistics. From 1/4/2001 to 31/10/2023, 8,586 crore rupees have been lost through banking frauds. Now, only 4.15 crores out of this money could be returned to the victims. So that means rupees 8.60 crore per day on an average is being lost or looted from hapless victims. Now, sir, recovery of money to hapless victims is a very lengthy process. The investigating agencies would have actually caught the accused. They would have got the money also. But to retrieve the money and give it back to the victims, hapless victims, is a very, very lengthy process. There is nothing mentioned in this particular statute so that the hapless victims get back their money which they have lost. Now, sir, there should have been some provision in this particular statute on that. Now, another problem which is encountering is about this CIBIL. We all know that there is this CIBIL rating on the basis of which the loans are being sanctioned to individuals. But nobody knows what is CIBIL.
who is CIBIL and what is the legal sanctity of this CIBIL. There is no transparency. Just 30 seconds, sir. Just 30 seconds. Very positive. Sir, government should have incorporated this as a part of the legislation, sir. I'm just concluding, sir. Just give me 20 seconds only, sir. And one another issue which I have to encapsulate is that the bank deposit growth is lagging behind the loan growth. And therefore, there is no money now in the bank because everybody is going to investments, other investments. Now, in conclusion, sir, please conclude. In conclusion, sir, certain provisions, therefore, actually warrant deeper scrutiny and potential require reconsideration or revision. I therefore urge the government to adopt cautious and consultative approach, balancing. Nothing is going on record now. Shri P.P. Puneer. 3 minutes. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. 3 Given minutes. the paucity of time, I will only briefly touch on the issues facing our banking ecosystem. Under the BJP's rule, India's banking system has been repeatedly mismanaged to favor large corporate interests, while bank employees, students, youth, and ordinary citizens suffer. Over the past 10 years, 16.35 lakh crore rupees in bad loans have been written off, benefiting corporate defaulters, while common borrowers face rising penalties and loan recovery pressures. This government that hesitates to waive farmers and students' loans has shown no such reluctance in protecting corporates who default on thousands of crores. This is a financial system where the rich walk free while the common man bears the burden. Cooperative banks, which serve small farmers, traders, and rural communities, have been systematically sidelined. While corporate banks receive government bailouts, cooperative banks are left struggling. If we truly want financial inclusion, we must provide cooperative banks with the same level of policy support and capital access. Strengthening these institutions will empower millions of small borrowers who are often ignored by larger financial institutions. At the same time, the rise of shadow lenders and cyber fraud has created new dangers in our financial system. Non-banking financial companies operating without stringent oversight pose serious risk to economic stability. Meanwhile, digital banking frauds are on the rise, leaving citizens vulnerable of financial scams. The government must introduce stronger regulations to rein in unregulated lenders and invest in robust cyber security frameworks to protect people's hard-earned money. The time for wage promises is over. We demand immediate action. The government must recover public money from big defaulters instead of writing off their loans. It must fill all vacant posts in public sector banks to provide employment and improve services. The 5-day banking week must be implemented to support employees and enhance productivity. Cooperative banks must receive the backing they deserve to serve the people. Strict regulations on shadow lending and better cyber security must be enforced to protect citizens from financial fraud. These are not just demands. They are necessary corrections to our banking system. The government must act now, sir. Thank you, sir. Thank you. सुश्री कविता पाटीदार 15 मिनट. धन्यवाद माननीय सभापति उपसभापति महोदय. इस महत्वपूर्ण बिल पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया. महोदय, हम जानते हैं कि बैंकिंग प्रणाली किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है. बैंकिंग प्रणाली जितनी सशक्त होगी उतनी ही उस देश के आर्थिक विकास में सहयोगी सिद्ध होगी. सरकार ने इस बिल के माध्यम से भारतीय बैंकिंग प्रणाली को एक नई दिशा और मजबूती देने का काम किया है. इसलिए सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ. महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगी 1893 का वो समय जब भारत के एक युग पुरुष एक नरेंद्र ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी. और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि 2025 में भारत के दूसरे नरेंद्र ने उस बात को सत्यता के धरातल पर लाकर खड़ा किया है. आज हम दुनिया की अर्थव्यवस्था के 5वें पायदान पर खड़े हैं और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही जल्द हम तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं. भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है. लेकिन अगर हम पहले 2014 के पहले को देखें महोदय, तो बैंकिंग प्रणाली इतनी सशक्त नहीं थी. पहले भारत की आबादी के सिर्फ 53% लोगों के पास ही बैंक की सुविधा थी, उनके खाते थे. बैंकिंग प्रणाली बहुत ध्वस्त थी.
पहले लोगों को जब बैंक से लोन लेना पड़ता था ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि उनके पास खाते नहीं हुआ करते थे, वो खातों से वंचित थे, उन्हें वही निजी क्षेत्र में जो साहूकार होते थे, जो ऋणदाता होते थे, उनसे ही लोन लेना पड़ता था। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, उन्होंने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि प्रत्येक व्यक्ति तक हम बैंकिंग की सुविधा पहुंचाए, बैंकिंग प्रणाली को हम साफ सुथरा करें। जबकि उनके राज में बैंकिंग क्षेत्र में घोर भ्रष्टाचार था, लापरवाही थी, कुप्रबंधन था। फोन बैंकिंग के आधार पर लोन दिए जाते थे। जब लोन लेना होता था, शक्तिशाली संबंधों के आधार पर उनको लोन दिया जाता था, मनमानी तरीके से लोन दिया जाता था। इसलिए बैंक संकट में आ गई थी और जितनी भी बैंकिंग प्रणाली थी वो पूरी वेंटिलेटर पर आ गई थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मोदी जी का, 2014 के बाद जब भारत का नेतृत्व माननीय मोदी जी को मिला, तो उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को, हर क्षेत्र के व्यक्ति को बैंक तक पहुंचाने का काम किया, प्रत्येक व्यक्ति को बैंक की सुविधा मिले, इसके लिए उन्होंने ये प्रयास किया। और उनके ही प्रयासों का ये प्रतिफल है कि जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से आज 54 करोड़ लोगों को जनधन के खाते मिले हैं। ये वो वंचित लोग हैं जिनको कभी भी बैंक का खाता जिनका नहीं खुला, जिनको बैंकिंग सुविधा नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, 18 लाख बैंकिंग टचिंग पॉइंट है जिनके द्वारा आज भारत में प्रत्येक 5 किलोमीटर पर व्यक्तियों को बैंकिंग बुनियादी ढांचा का उपयोग कर सके, ऐसी सुविधा मिली है। महोदय, हम जानते हैं कि पहले ग्रामीण सुदूर के जो गरीब भाई बहन है वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, उनकी चिंता कभी किसी ने नहीं की, पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं की। लेकिन माननीय मोदी जी ने उनकी चिंता करी, उनके आंसू पोंछने का काम किया और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के द्वारा 30 लाख करोड़ से अधिक का वितरण माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज हुआ है। उतना ही नहीं, स्टैंड अप इंडिया के तहत, इस योजना के तहत भी 30,000 करोड़ का वितरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उस बात से मुझे बहुत गर्व है ये कहते हुए कि 76% उसमें महिलाएं हैं जिसमें उनको स्टैंड अप योजना का लाभ मिल रहा है। माननीय महोदय, पीएम स्वनिधि के तहत भी 94 लाख स्ट्रीट वेंडरों को जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके भी चिंता करी और उनको भी लोन देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। वहीं जन सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना ने गरीबों को अनिश्चितताओं से बचाने के लिए बहुत कम प्रीमियम पर किफायती बीमा सुनिश्चित करने का काम किया है। महोदय, अगर बैंकिंग की बात हो और मैं टेक्नोलॉजी की बात न कहूं तो मेरी बात अधूरी रहेगी। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से जीवन को कैसे बदला जा सकता है, ये देश दुनिया को बताने का काम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। मोदी जी की दूरदृष्टि का ये परिणाम था कि बहुत पहले ही उन्होंने डिजिटल इंडिया का संदेश पूरी दुनिया को दिया। ग्राहकों को त्वरित और बहुत अच्छी सेवाएं प्राप्त हो, पारदर्शी सेवाएं प्राप्त हो, इसलिए बैंकिंग में टेक्नोलॉजी का समावेशन पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया और उन्हीं के सशक्त प्रयासों का ये परिणाम है कि आज सब्जी वाला, ठेला वाला, रेहड़ी वाला, ठहरी वाला सब लोग डिजिटल इंडिया से जुड़े हैं। आज एक सब्जी के पास भी हम जाते हैं, सब्जी वाले के पास, तो खुले पैसे के कारण उसका आर्थिक नुकसान नहीं होता है, 100% उसको पैसे बैंकिंग के माध्यम से, जो डिजिटल के माध्यम से उसके पास पहुंचते हैं। आज हर एक व्यक्ति पैसों का लेन देन डिजिटल के माध्यम से कर रहा है। और इतना ही नहीं माननीय महोदय, आज जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको भी डिजिटल करके 100% पैसा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, किसान सम्मान निधि हो, प्रत्येक हितग्राही के खाते में 100% पैसा पहुंचता है। कांग्रेस की सरकार का वो वक्तव्य कि जब ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे 15 ही पैसा पहुंचता है, उसको खत्म करने का काम किया, भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया, पारदर्शिता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं होगा। माननीय महोदय, टेक्नोलॉजी का समावेशन पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और बहुत अच्छा काम किया। देखिए, बैंक, मोबाइल और आधार तीनों को कनेक्ट किया और इस त्रिशक्ति के कारण जो प्रत्यक्ष लाभांतर है वो बहुत अच्छे से मिलने लगा और लीकेज कम हुआ। और मैं ये बताना चाहूंगी कि लगभग 3.5 लाख करोड़ गलत हाथों में जाने से बचे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण। महोदय, इसके साथ ही संकटग्रस्त खातों की पहचान और समाधान, आर्थिक अपराधियों पर कार्रवाई तथा बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और सुधार की नीति के कारण 2014 के बाद से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की वित्तीय स्थिति और मजबूत और उसमें सुधार हुआ है। माननीय महोदय, ये जो सुधार किए गए हैं उसके कारण इतिहास रचा गया है और कहा भी गया है, हे समय नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया करते हैं, हे समय बड़ा तूफान
प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ लोग बिरले होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, और ये इतिहास माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि बैंकिंग क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2023-2024 में अपना अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ 3 लाख करोड़ पार कर दिया गया है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। साथ ही बैंक ऋण वृद्धि 16% के दशकीय उच्च स्तर पर है, और यह सब हमारे अभूतपूर्व लीडरशिप के कारण संभव हो सका है। यही नहीं, सुधार के साथ रिकवरी भी हुई है। अगर हम बात करें तो बैड बैंक लोन के कारण हम जो अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहे थे, 2014 से 2023 के बीच लगभग 10 लाख करोड़ हम लोगों ने रिकवर किए हैं। उसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ सदन में बहुत बार ईडी की बात चलती है, मैं ईडी पर भी आना चाहूंगी कि ईडी द्वारा 1100 फ्रॉड पकड़ा गया है, और इस फ्रॉड के माध्यम से 65,000 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, और लगभग 15,000 की संपत्ति सार्वजनिक बैंकों को वापस दी गई है। इन अथक प्रयासों से बैंकों का कायाकल्प हुआ है। अब इस जो अधिनियम लाए गए हैं उसके सुधार के बारे में भी मैं कहना चाहूंगी। महोदय, अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों में जमाकर्ताओं के पैसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए सामान और लॉकर के भुगतान के लिए क्रमशः अभी तक एक व्यक्ति को नॉमिनी करने की अनुमति थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी को। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नॉमिनी का प्रावधान इस प्रस्ताव के माध्यम से, इस विधेयक के माध्यम से किया गया है। यह बदलाव अनक्लेम्ड अकाउंट को सही उत्तराधिकारी तक पहुंचाने के लिए भी मदद करेगा। और इसमें सबसे मुख्य बात, यदि खाते में जमा राशि 7 वर्षों तक अनक्लेम्ड रहती है तो उसे आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया जाता था। यह विधेयक आईईपीएफ में स्थानांतरित की जाने वाली निधियों के दायरे को विस्तृत करता है। अब दावा न किए गए शेयर, ब्रांड, ब्याज राशियों को भी आईईपीएफ में स्थानांतरित किया जा सकेगा। वर्तमान में सहकारी बैंकों में निदेशों का कार्यकाल 8 वर्ष था। इस विधेयक के माध्यम से उसको 10 वर्ष तक बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस नए कानून के तहत एक और महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। आरबीआई को रिपोर्ट देने की समय सीमा बदलने की अनुमति अब बैंकों को दी गई है। वर्तमान रिपोर्टिंग फ्राइडे टू फ्राइडे प्रणाली थी। इसमें कई सीमाएं थी जो डेटा की रिपोर्टिंग की सटीकता और प्रभावशीलता को प्रभावित करती थी। अब यह रिपोर्ट 15 दिन, महीने और तिमाही के अंत में की जा सकेगी। यह प्रस्तावित संशोधन न केवल बैंकों की कार्य प्रणाली में सुधार लाएंगे, बल्कि निवेशकों और खाता धारकों के हितों को भी सुरक्षित करने का काम करेंगे। महोदय, यह विधेयक भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अधिक सशक्त, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। ये केवल बैंकिंग क्षेत्र की कार्य प्रणाली को आधुनिक नहीं बनाएगा, बल्कि निवेशकों और ग्राहकों के हितों की रक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। इस अधिनियम के द्वारा जितने भी सुधार किए गए हैं, मुझे लगता है कि यूपीए की जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी, उनके पापों को प्रायश्चित करने का काम इस विधेयक के द्वारा किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस प्रकार के सुधार माननीय प्रधानमंत्री जी को जो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उसकी तरफ एक मजबूत कदम है। और ये मजबूत कदम, बढ़ते कदम माननीय अटल जी के उन पंक्तियों को भी रेखांकित करते हैं कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। बैंकिंग के क्षेत्र में जितने भी फ्रॉड हुए थे, उन सारे फ्रॉडों को उजागर करना, बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करना, बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता लाना, उसमें मजबूती लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और इस बैंकिंग का जो अधिनियम आया है, उसमें जितने भी सुधार किए गए हैं, निश्चित बैंकिंग प्रणाली मजबूत होगी, उसके द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हम जल्दी तीसरी ताकत बनकर भारत को जो विश्व गुरु बनाने का हमारा सपना है, उसको हम पूरा कर सकेंगे। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः वो दिन कि भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया के मस्तक पर भारत रौली जैसा चमकेगा, वो दिन हम देखेंगे। पुनः मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमन जी को इस बिल के लिए, इस संशोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस धन्यवाद के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कविता पाटीदार जी, आपने तय समय से पहले ही खत्म किया।
Dr. Fauzia Khan ji, 3 minutes. Thank you, sir. Sir, I understand that the bill seeks to improve governance standards in the banking sector. While welcoming the intent, I would like to make a couple of quick suggestions. The rupees 2 crore threshold for substantial interest could be indexed to inflation or made dynamic based on economic conditions. Additionally, raising the threshold to 2 crores may reduce scrutiny of smaller but influential stakeholders. Sir, the amendments do little to address challenges faced by rural and cooperative banks such as high NPAs and lack of technological infrastructure. While prioritizing depositor protection, the bill overlooks systemic reforms needed to improve rural banking access and streamline credit delivery. Also, the question, sir, is whether the speed of our efforts is matching the speed at which the financial world is changing with emerging technologies. What with challenges such as cryptocurrency, online scams, digital arrests, growing at a bewildering pace, every new day emerges with a new challenge. Are our legislations matching the pace? Sir, Chris Skinner had said, ignoring technological change in a financial system based upon technology is like a mouse starving to death because someone moved their cheese. The growing use of AI in this sector is creating new challenges and systemic risks due to the reliance on a small number of dominant technology providers, which could lead to widespread disruptions in case of failures. Additionally, the opacity of the AI makes it difficult to audit and interpret decision-making algorithms, raising concerns about unpredictable market outcomes, increased vulnerability to cyber attacks, and potential data breaches. These emerging risks underscore the need for robust risk mitigation practices in the banking industry. Sir, Earl Wilson had said, money in the bank is like toothpaste in the tube, easy to take out, hard to put back. The bill fails to address newly emerging challenges, sir, like digital arrests, cooperative bank scams. 4,016 cooperative banks have reported financial frauds during the last 5 years. The years of delays faced by depositors in such cases have been ignored, sir. Sir, Aadhaar linking and KYC requirements in India have led to millions of accounts being frozen. Counterfeit currency and its impact, particularly 500 rupee notes, sir, with a 317% rise, sir, half a minute. In fake 500 rupees notes and 166% 2,000 rupee notes from 2018 to 22. So just give me half a minute, I'm concluding. Please conclude. Obviously, sir, strengthening the legal frameworks is essential. I will only say, forewarned is forearmed. I leave it to the government to take cognizance of our suggestions. Thank you. Thank you, sir. Srimati Sunetra Ajit Pawar, not present. Dr. Sikandar Kumar, 15 minutes. Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on important bill, the Banking Laws Amendment Bill 2024. Sir, in 1926, then the Government of India appointed a commission which is known as the Hilton-Young Commission to express their views regarding the functioning of Central Bank of our country. On the recommendation of Hilton-Young Commission, the RBI Act was passed in 1934, and RBI started its functioning from 1st April 1935. Earlier, the central banking functioning were performed by the Imperial Bank of India, and after the nationalization of it on 1st July 1955, it came to be known as the State Bank of India. Since then, the RBI act as the central bank of our country. Sir,
After the enactment of RBI Act 1934, the Banking Regulation Act 1949, State Bank of India Act 1955, Banking Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1970, Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1980. There are so many loopholes, and in order to overcome these loopholes, the Finance Minister has brought this bill, that is Banking Laws Amendment Bill 2024. And I congratulate to the Honorable Finance Minister for bringing this important bill. Deputy Speaker, sir, the Banking Laws Amendment Bill 2024 seeks to amend the key banking regulation with the objective to improve governance standards, to provide consistency in reporting by banks to the Reserve Bank of India, to ensure better protection for depositors and investors, to improve audit quality in public sector banks. The proposed amendments are a comprehensive legislative effort aimed at modernizing and enhancing the regulatory framework governing India's banking sector. Drawing lessons from past mistakes, the Modi government is committed to rectifying previous wrongs and ensuring good governance in the banking sector. The proposed amendments are not merely regulatory changes, they represent a bold step towards enhancing transparency and accountability, safeguarding the interest of investors, and rebuilding public confidence in our financial institutions. This initiative underscores a vision for a banking system that prioritizes integrity and trust, paving the way for a brighter economic future for all citizens. Sir, previously the cooperative banking sector has faced a crisis of confidence, large due to the multi-crore loan scams involving Punjab and Maharashtra Cooperative Bank, Maharashtra State Cooperative Bank, and Korbnor Service Cooperative Banks. The scandals in the cooperative sector have created a significant trust deficit, leaving millions of ordinary depositors vulnerable and anxious about the financial future due to a legacy of misgovernance. The NDA government, in response to the PMC scam, introduced of multiple state cooperative banks. The act aimed at improving cooperative banks management and regulation as to the protect the interest of the depositors by bringing these banks under the supervision of the RBI. To ensure good governance, improve access to capital while protecting investors' interest, the bill proposes the extension of the tenure of cooperative bank directors and permit directors of central cooperative banks to serve on the boards of state cooperative banks with the goal of promoting professional management and enhancing governance within cooperative institutions. Sir, the shallow and failed attempts towards furthering financial inclusion under the UPA regime were marred by inefficiencies and a lack of genuine commitment. However, the Modi government, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, has been a game changer by opening over 53 crore bank accounts in the past decade. The scheme is the largest financial inclusion initiative aiming at universal and affordable access to formal banking services, integrating marginalized sections into the economic mainstream. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana success is a reflection of the Modi government larger vision of banking for all, correcting the failures of the past government that left millions unbanked and vulnerable. The amendments proposed under the bill collectively aim to strengthen the banking framework, making governance more transparent and financial services more accessible for marginalized groups, representing a significant step towards the Modi government commitment to good governance and financial inclusion for all. The previous UPA government has failed to address the needs of the ordinary citizens and include the marginalized in the journey of success and inclusion. While the UPA era
was characterized by inefficiency and a lack of commitment to empowering the marginalized. The Modi government has harnessed the power of the Jan Dhan, Aadhaar and mobile entity to facilitate a direct benefit transfer system directly into their bank accounts, free from the clutches of middlemen. This approach guarantees that supports reaches the marginalized section, but also provides timely financial assistance for essential schemes such as pensions, scholarships, and subsidies for basic goods. For the first time, constitutional recognition has been granted to the National Commission for Backward Classes, safeguarding OBC rights within the governance framework. The regime of neglect and exclusivity is long gone, and under the leadership of Modi government, we are witnessing a new dawn in financial inclusion that is reshaping the future of our nation. Sir, gone are the days when the Indian banking sector was plagued by a cesspool of bad loans, vested interest, corruption, and mismanagement. Under the previous UPA government, the banking landscape was marked by a gross NPA ratio that scored to 12.3% by September 2013, largely due to political interference in lending decisions and the concealment of bad loans. This negligence not only eroded public trust, but also inflicted significant losses on banks, jeopardizing the savings of countless depositors. But to recover the revive the banks, the Modi government constant reforms targeted towards improving the health of the financial sector led to a remarkable turnaround, with gross non-performing assets ratio declining to a multi-year low of only 0.6%. Sir, the UPA government neglected action towards the financial health of the banking sector, led to the banking sector reaching a critical low, with banks being reluctant to lend, especially to small and medium-sized enterprises that drive employment. The urgent need for its revitalization was realized by the Modi government that made concerted effort towards transforming the banking sector into a vital asset for economic growth and restoring public trust in financial institutions. Through a comprehensive 4R strategy of recognition, resolution, recapitalization, and reforms focused on enhancing transparency in non-performing assets, effectively resolving stressed accounts, recapitalizing public sector banks, and instituting necessary reforms. The proactive approach has resulted in recoveries exceeding rupee 10 lakh crore from bad loans between 2014 and 2023, significantly strengthening the banking ecosystem and fostering a responsible and clean financial system. Honorable Sir, as proposed under the present bill, the expansion of the scope for transferring unclaimed amounts to the Investor Education and Protection Fund, IEPF, signifies the commitment of Modi government to protect investors' interests and promote financial literacy across India. The bureaucratic inefficiencies and lack of transparency prevalent under the UPA government led to languishing of unclaimed funds, with investors being unaware of their rights to claim them. In contrast, the Modi government is committed to actively managing and regulating these unclaimed funds, thereby empowering investors and fostering a more transparent banking environment. This proactive approach of the government protects investors' rights and fosters financial literacy, helping individuals make informed decisions about their investment. Sir, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the push for digitization in the banking sector has marked a transformative shift compared to the previous UPA government. The establishment of 75 digital banking units across various districts represents a significant step towards enhancing financial inclusion, particularly in rural and semi-urban areas. Gone are the days when digitization was merely a dream reserved for the affluent, unlike the UPA era, which struggled with inefficiencies and limited access. The Modi government had prioritized initiatives like DigiDhan mission and platforms such as UPI and Bheem, leading to a remarkable increase in digital transactions. Furthermore, programs like
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana have opened millions of bank accounts for previously unbanked population, empowering citizens and ensuring that banking services are accessible to all, aligning with the vision of a self-reliant India. The amendments proposed under the bill are designed to further enhance the regulation and governance of banks, aiming to create a robust and reliable framework that supports the ongoing digitization of banking services and ensures equitable access for all. The drive digitization is not just about convenience, it is about creating opportunities, driving innovation, and building a more equal society. Sir, making a fundamental shift towards a better, accountable, and transparent banking system, unregulated practices are over, and we are witnessing a new dawn for the banking sector, while the UPA government mismanagement left the banks vulnerable and struggling, resulting in a significant trust deficit. The Modi government has undertaken significant reforms to rejuvenate the banking landscape, focusing on restoring confidence and enhancing service delivery for all citizens. With the proposed amendment, increasing the number of nominees, allowing the appointment of up to 4 nominees per account, enabling simultaneous nominees, the government aims at easing and vetting the banking services for the general public. The transformation has emphasized on the critical role of a robust banking sector as a cornerstone of economic growth and development, transitioning from a period of scarcity to achieving strong banks for a strong economy with the broader vision of a self-reliant India. Sir, in my concluding remarks, I would like to say that the Banking Laws Amendment Bill 2024 seeks to amend the Reserve Bank of India Act 1934, the Banking Regulation Act 1949, the State Bank of India Act 1955, the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1970, and the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1980. The proposed bill aims to improve the audit quality in the public sector banks, ensure consistent reporting to the RBI, and extend the tenure of directors in cooperative banks, streamlining the banking operation, aligning them with contemporary financial practices. I support the proposed amendment and urge to all the honorable members of this House for their support in the proposed amendment. Thank you very much. Thank you. Dr. V. Sivadasan. Respected Chair, the public sector banks in India are protecting the economic stability of our nation. So each and every bill should be properly examined by this House. Over the last decade, Indian banks have written off approximately 16.35 lakh crore rupees. After 2014, every year, this government written off huge amount. Huge number of people, including the poor, are depending upon the banks for keeping their money. So now the richest of the rich are getting lot of facilities from the bank, but the facilities for the ordinary people have deteriorated. Earlier, public sector banks used to give gold loans to a large number of people for agricultural activities. The interest rate was also comparatively lower for this loan. It helped thousands of farmers in our country. But now the number of such loans has come down. So the people are compelled to go to private money lenders who are collecting exorbitant interest. So that is why such companies are making huge profit. The usurers have taken big amount from the public sector banks and they are lending the money to the people at exorbitant rate. The public sector banks are used as providers of money to the money lenders, like the big corporates. So the rural-urban divide also in availability of credit has increased. The leading banks have given
only a marginal number of loans to villagers. The rural India is still trapped by the private money lenders. The major share of the loans has taken by the richest of the rich, a small section of the society in cities who are very close to the union government or the part of the ruling class. Sir, in banking sector, huge number of employees are working as a contract laborers. They have no labor right. Ground reality is that they have no fixed working time. Lakhs of women workers are there, but they don't have maternity leave, they have no pension scheme, they have no treatment facility. There is no reservation in the contract jobs. Sir, increasing contractualization is a threat to the inequality of the nation, and it will also ruin the credibility of the bank. Sir, we should oppose the contractualization in our banks. Employees in these banks are struggling for their basic rights. The number of employees in public sector banks has declined. Sir, in 2014, the total number of employees stood at 8,42,813. However, the figure has now dropped to 7,64,679. The workload of employees has increased. Even with the fixed working hours, workers are often forced to work late night, especially during the financial year end and during the audit time. Sir, in banks, there should be proper criteria for transfer and posting. Frequent transfers disrupt the lives of the workers and their families. Bank employees are forced to mobilize audience for the propaganda program of the union government. They are also compelled to work as agents of insurance schemes and government money collection schemes, so, which provides only a pittance in returns to the people. Employees have more than 15 targets to meet due to government directives, most of which involve promotional work of the union government. Sir, in our banks, the number of transactions has increased, which is natural, but the number of complaints has also risen, which is not natural. This is due to the systemic failure. Sir, daily transaction monitoring is an essential part of the bank's loan documentation and loan recovery are also the responsibilities of bank employees. In 2014, the employees to account ratio was 1:1,251. By March 2024, this ratio has worsened to 2,686. Bank employees urgently need the right to disconnect. Sir, the right to disconnect is a labor law principle that allows employees to disengage from work-related communications outside their official working hours. Work-life balance and job satisfaction is essential part of well-being. So the government is trying to destroy smaller banks by merging them. After merging, they are being privatized. Sir, but international experience shows that a network of smaller banks is healthier for the economy. The bank privatization is a serious threat to public banking system. The network of cooperative banks in Kerala is an example of robust and popular banking network, which is accessible to the common people. Sir, but the union government, they are trying to centralize cooperative banking system. Cooperative banking system, they are providing lot of facilities for the poorest of the poor in our village. Sir, the public banking system should be protected. Privatization and contractization should be resisted. For that, sir, we are requesting to the government the recruitment of the people, drive for the banking sector. That is very important. The government should conduct the recruitment drive, and now we all know thousands of posts are lying vacant in our
in our public sector banks. The poster which is laying as vacant, that should be addressed, and the recruitment should be conducted in our bank. Sir, our request the government to protect the cooperative sector, protect the public sector banks in our nation. Thank you, sir. Thank you, Sivadasan ji. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी, आप। थैंक यू सो मच डेप्यूटी चेयरमैन सर कि आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बोलने का मौका दिया। सर, ऐसी बहुत सारी बातें कही गई डिफॉल्टर्स के बारे में, लोन राइट ऑफ के बारे में, बहुत सारी चीजें। मैंने सोचा कि मैं अपना पक्ष कुछ बातें रखूंगी, क्योंकि ये जो बिल आया है अमेंडमेंट के माध्यम से आया है, इस भाव से आया है कि आम आदमी को किस तरीके से उनको और उनके बैंकिंग सिस्टम में सुरक्षा मिली जा सके, पर बनते बनते ऑन ग्राउंड ये सब खास आदमियों के लिए बन जाता है। ये सारी जो चैलेंजेस हैं, आई एम श्योर वित्त मंत्री जी खुद जानती हैं, उस पर मैं बोलना नहीं चाहूंगी, बस मैं आपको इसका पूरा सार बताना चाहती हूँ जो आज हमारे बैंकिंग सिस्टम में हो रहा है। सर, एक तरफ है हमारे विलफुल डिफॉल्टर्स। वो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, यानी पैसा है, पे कर सकते हैं, पर वो क्या करते हैं, पहली टिकट लेकर विदेशों में चले जाते हैं, वहां से अच्छे अच्छे अपनी फोटोज भेजते हैं। कुछ विलफुल डिफॉल्टर्स हैं जो कहते हैं हमने तो इंडियन सिटीजनशिप भी त्याग दी है, नए कंट्री के सिटीजन बन जाते हैं, फिर हमारा देश जागता है, हमारी सरकार जागती है, फिर उनकी सिटीजनशिप रद्द कराती है। दूसरी तरफ आम आदमी है, अगर वो एक लोन रीपेमेंट में थोड़ी देर कर दे तो कलेक्शन एजेंट्स उसके घर पहुंच जाते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और उनको प्रेशर डालते हैं कि वो पेमेंट करें। ये जो हमारे खास आदमी और आम आदमी की स्टोरी चल रही है। सर, दूसरी तरफ लोन्स राइट ऑफ हो रहे हैं। कितने लोन्स राइट ऑफ हो रहे हैं उसका आंकड़ा आई एम श्योर वित्त मंत्री अच्छे से जानती हैं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहूंगी, वो नाराज हो जाती हैं बार बार हम जब बोलते हैं, पर हैं राइट ऑफ हुए हैं। उन राइट ऑफ लोन्स का तरफ जो लेते हैं ये लोन्स और राइट ऑफ होते हैं उनके, वो एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, उनपे जो केसेस हैं वो चल रहे हैं, पर उनका कुछ उनसे खींचा नहीं जाता है। दूसरी तरफ हमारा जो आम आदमी है वो गारंटी पे गारंटी दे देकर, डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स दे देकर एक लोन पाने की कोशिश करता है। आप स्टूडेंट लोन देख लीजिए, आप एजुकेशन लोन की तरफ देख लीजिए, फार्म लोन की तरफ देख लीजिए, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगी, आंकड़े मैडम के पास होंगे ही। सर, कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, महाराष्ट्र से मैं आती हूँ, महाराष्ट्र में भी हमने देखा है किस तरीके से जो रीजनल सैट्रैप्स होते हैं वो जनता का पैसा लेकर उसको किस तरीके से मिसयूज करते हैं, उसका इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। जो गंदगी है और जो सफाई होनी चाहिए। उसी तरफ वो किसान है जो उम्मीद करता है कि कुछ रिलीफ हमें मिलेगी, हमें कोई लोन मिलेगा, इंस्टीट्यूशनलाइज लोन बनाने का एक माध्यम बनेगा, उनसे उसको वंचित रखा जाता है। महाराष्ट्र में करीब पिछले साल 2000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। सर, जो अभी कुछ ही दिन पहले बजट जब पेश किया गया था, प्रधानमंत्री जी खुद क्रिएटर्स इकोनॉमी की बात करते हैं, कंटेंट इकोनॉमी की बात करते हैं, कॉन्सर्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, और एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होने जा रहा है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से, वेव्स का मुंबई में ही होगा। तो एक तरफ हम इस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम फंड्स एलोकेट करते हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन कोई जोक कर दे जो हमारे पावरफुल लोगों को पसंद नहीं है, उनका घर सर विषय पर, हाँ सर, ठीक है मैं खत्म कर रही हूँ, उनका विषय पे ये फंड एलोकेट हुआ ना, पर वही इकोनॉमिक एक्टिविटी को तोड़ फोड़ कर उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। तो यही आज आम आदमी और खास आदमी का जो अमेंडमेंट्स हो, बैंकिंग लॉज हो, बैंक्स हो, उसका अंतर मैंने इसी साल में 3 मिनट में बताने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ वित्त मंत्री इस पर जवाब। थैंक यू। श्री महेंद्र भट्ट, 15 मिनट। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया है। महोदय, बैंक के बारे में जब चर्चा होती है तो आज मैं कहता हूं विश्व के अंदर अगर अर्थव्यवस्थाओं को ठीक दिशा की ओर बढ़ाने का काम किसी सेक्टर ने किया तो बैंकिंग सेक्टर ने किया है। और मैं भारत की दृष्टि से अगर बात करूं तो 16 मार्च 1949 को बैंकिंग कंपनी अधिनियम के नाम से इसको लागू किया गया था। 1 मार्च 1966 को इसका नाम बैंकिंग अधिनियम बना। अनेकों बार संशोधन हुए और संशोधनों का प्रमुख उद्देश्य होता है समय काल परिस्थिति के अनुसार उसमें क्या जोड़ना चाहिए, किससे हम ग्राहकों को अच्छी सुविधा दे सकते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस भाव के साथ ये संशोधन बार बार किए गए। सन 1965 में
अधिनियम में धारा 56 को जोड़ा गया तथा देश के सभी सहकारी बैंकों को इस अधिनियम में के साथ लागू किया गया। महत्वपूर्ण विषय कि सहकारी बैंकों का आज बहुत बड़ा महत्व हो गया है। देश के अंदर उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा किए गए कार्य ये जनता के सामने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। 1983 में फिर संशोधन कर भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक शक्तियां प्रदान की गई। रिजर्व बैंक के अंदर जो शक्तियां जिस रूप में दी जानी चाहिए थी, मुझे लगता है कि तत्कालीन सदन को लगा होगा कि कुछ और अधिकार, कुछ और शक्तियां इसको दी जाए, उसके लिए इसमें प्रावधान किया गया। 1993 में बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बल दिया गया। निश्चित रूप से बैंक की अपनी कुछ मान्यताएं होती है, बैंक के अंदर काम करने की गतिविधियां होती हैं, लेकिन ग्राहक को उसकी सुविधा मिले, पारदर्शिता दिखाई दे, इस भाव के साथ भी संशोधन उस कालखंड में किए गए। 2004 में बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता को संशोधन से का बल दिया गया। स्थिरता बैंक की बनी रहे, इसकी सबकी आवश्यकता है कि अनेकों बैंक खुलते थे, अचानक बंद हो जाते थे। इस प्रकार के माहौल देश के अंदर था और आम पब्लिक को बैंक से विश्वास जिस रूप में स्थापित होना चाहिए तो उसमें कुछ कमी दिखाई दी और विधेयक की उसमें चर्चा की गई। 2017 में अब बैंकों का दिवालिया और दिवालेपन के संबंधित अनेकों घटनाएं हुई और इससे ये लगता था कि आखिर जो जमा करता है उस जमा करते का कैसे विश्वास अर्जित किया जाए। तो उस समय पर 2017 में दिवालिया और दिवालेपन के संबंधित प्रावधानों का इस संशोधन में व्यवस्था की गई। सन 2020 में का संशोधन ये काफी महत्वपूर्ण रहा। इस संशोधन से देश के सभी सहकारी बैंकों को आरबीआई से जोड़ा गया। पहले सहकारी बैंक आरबीआई की गाइडलाइन के तहत नहीं चलते थे, ये व्यवस्था की गई। उसी दिन 1482 शहरी और 58 बहु राज्य सहकारी बैंकों को इससे जोड़ा गया। मैं आज के आंकड़े न कहूं, लेकिन अगर मैं 2022 की जो जानकारी मेरे सम्मुख है उसको रखना चाहूंगा। सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक, तो उनकी शाखाएं बहुत हो गई हैं, उसकी चर्चा पूर्व वक्ताओं ने की है, मैं उस चर्चा की ओर नहीं जाऊंगा। निजी क्षेत्र के बैंकों 22 बैंक, विदेशी बैंक 44, सहकारी बैंक 1485 और ग्रामीण सहकारी बैंक लगभग 96,000 बैंकों को इस समय इसके तहत जोड़ने का काम किया गया। महोदय, आज बैंक की जो व्यवस्थाएं हैं और जो संशोधन की अवस्था आज जो 3 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पारित किया गया, उसकी कुछ वैधानिक आवश्यकताएं थी। उसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, उस पर मैं थोड़ा सा माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को रखूंगा। धारा 18, 25, 27, 56-18 मैं संशोधन की क्या अवस्था पड़ी मैं बताना चाहता हूं। महोदय, बैंकों द्वारा आरबीआई को सर्वाधिक रिपोर्ट की चर्चा बार बार आ गई कि पहले हर शुक्रवार को दिया जाता था, लेकिन आज की जो परिस्थिति है, आज बैंक की गतिविधियां जो ऑनलाइन होने के बाद जो सबसे ज्यादा उसकी ठीक प्रकार की रिपोर्टिंग रिजर्व बैंक को जो जानी चाहिए थी, उसकी व्यवस्था में चीजें तय की। क्योंकि आज गूगल है, पेटीएम है, भीम ऐप है, ऐसे अनेकों माध्यम है और इन सबका आंकड़ा प्रत्येक शुक्रवार को प्राप्त करना, उसकी ठीक प्रकार की व्याख्या और उसकी रिपोर्टिंग आरबीआई को करना संभव नहीं था। तो बैंकिंग गतिविधियों में अनेकों बार मौसमी उतार चढ़ाव भी रहते हैं। इन सब की रिपोर्टिंग की दृष्टि आवश्यक हुआ कि 15 तारीख की रिपोर्ट उसी महीने की 20 तारीख को तथा महीने की आखिरी दिन की रिपोर्ट अगले महीने की 5 तारीख को आरबीआई को दी जाए, जिससे कि प्रमाणिकता के आधार पर आरबीआई को बैंक अपनी रिपोर्टिंग कर सके। महोदय, दूसरा संशोधन 15 NC के तहत अधिनियम में किया गया, जिसमें पर्याप्त हितों का व्यापक उल्लेख है। इससे संशोधन किया गया कि पर्याप्त ब्याज को परिभाषित करते हुए जहां पहले उल्लेखित 5 लाख रुपए अथवा चुकता पूंजी का 10% के स्थान पर अब 2 करोड़ रुपए अथवा चुकता पूंजी का 10% कर दिया गया है। यह आवश्यक हो गया था महोदय, क्योंकि लंबे समय से इसको जो उसका उद्देश्य जो आपसी हितों का टकराव जो हो रहा था उसको रोकने के लिए, बैंकिंग संचालन की अखंडता को व्यवस्थित करने के लिए इस प्रकार की अधिनियम में व्यवस्था की गई। अधिनियम की धारा 20 में उल्लेखित है कि बैंकिंग कंपनियां ऐसी कंपनियों या संस्थाओं को ऋण या अग्रिम देने से रोकती हैं जहां निदेशक के पास पर्याप्त हित हैं। वहीं धारा 10 यह अनिवार्य करता है कि बोर्ड के कम से कम 51% सदस्य कर्मचारी, प्रबंधक या प्रबंध एजेंट के रूप में बैंक के साथ पर्याप्त हित या संबंधों में उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसका प्रावधान इसके तहत किया गया। पर्याप्त ब्याज दर की चर्चा मैंने की है। चुकता पूंजी का अब उसको बढ़ाकर 1968 में यह राशि जहां 1968 में जहां 5 लाख रुपए थी, अब इसको 2 करोड़ करने का प्रावधान इसमें किया गया। महोदय, तीसरा महत्वपूर्ण संशोधन, यह संशोधन सहकारी बैंकों के लिए बहुत अपेक्षित हो गया था। खासतौर पर सहकारी बैंकों की दृष्टि से इस संशोधन लाने की आवश्यकता महसूस हुई। बैंकिंग अधिनियम
की धारा 10A और ब्रैकेट में 2A-1 में अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर शेष का कार्यकाल 8 साल रहता था। अध्यक्ष और पूर्णकालिक तो 10 साल तक रह सकते हैं, लेकिन उनमें शेष का कार्यकाल 8 साल तथा अब उसे बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। इसका कारण क्या है महोदय? सहकारी समिति अधिनियम में बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों तथा सहकारी समितियों में पदाधिकारी कार्यकाल चुनाव की तिथि से 5 वर्ष होता है और इसके व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही थी। इस अधिनियम के तहत सेवा करने वाले निदेशकों को इस अधिनियम का पालन करने के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए बीच में ही अपने पद को छोड़ना पड़ता था। महोदय, चौथा संशोधन भी सहकारिता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 16 में व्यक्तियों को एक से अधिक बैंकिंग कंपनियों के बोर्ड में नाम कटने से रोकता है। महोदय, इस संशोधन में केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक को राज्य सहकारी बैंक बोर्ड में भी अब कार्य करने की अनुमति होगी। समितियों के स्तर में जो अलग अलग स्तर है महोदय, प्राथमिक कृषि ऋण समिति है, राज्य सहकारी बैंक है, केंद्रीय सहकारी बैंक है। प्रत्येक कृषि ऋण समिति का पदाधिकारी केंद्रीय सहकारी बोर्ड में जा सकता है, परंतु केंद्रीय सहकारी बोर्ड का जो सदस्य है, पदाधिकारी है, वो राज्य सहकारी बोर्ड में सम्मिलित नहीं हो सकता। इसलिए ये संशोधन बहुत अपेक्षित हो गया था, इसको संशोधन को इसमें किया गया। महोदय, 5वां संशोधन इसके अधिनियम के तहत इन धाराओं में किया गया। धारा 45 जमाकर्ता के धन के भुगतान के लिए नामांकन। धारा 45 सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं की वापसी के लिए नामांकन, खासतौर पर गिरवी वस्तुएं जो रखी जाती हैं। धारा 45 सुरक्षा लॉकरों में सुरक्षा से मुक्त करने के लिए नामांकन। और नई धारा इसमें जोड़ी गई है 45 कर्मिक नामांकन को प्राथमिकता देने की बात है। महोदय, यह आवश्यकता है कोरोना काल में पड़ी, जब कोरोना काल कर जो नाम नॉमित किए जाते थे उनका अकाल मृत्यु हो गई और ऐसी स्थिति में जो जिनका धन था, जो जमा पूंजी थी, वो पूंजी लैप्स हो गई, उसको निकालने में कठिनाई परिवारों को महसूस हुई। अब 4 नॉमिनी इसमें उल्लेखित किए गए हैं और परिवारों को मिलने वाला पैसा अब आसानी के साथ मिलेगा, साथ ही कानूनी प्रक्रिया भी समान होगी। महोदय, 6वां संशोधन काफी छोटा है, बड़ा संशोधन नहीं है। इसके तहत जमा बीमा निगम DICGC की परिभाषा, प्रबंध निदेशक की परिभाषा और प्रायोजक बैंक की परिभाषा उल्लेखित है। इसमें केवल जब बैंकिंग अधिनियम संशोधन 2020 में पेश किया गया था, उसके तहत जमा बीमा निगम और प्रबंध की परिभाषा छोड़ दी गई थी। उस समय उसका उल्लेख उसमें हो नहीं पाया था 2020 में, जो सहकारी बैंक के लिए अप्रासंगिक और व्यावहारिक बनी हुई थी, अतः उसे बहाल करने के लिए प्रायोजक बैठक की परिभाषा को इसके तहत हटा दिया गया है। महोदय, धारा 35 से दावा ने किए गए लाभांश का हस्तांतरण अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरण से जुड़ा है। इसमें यह सुनिश्चित होगा कि बिना दावे वाले शेयर, ब्याज या बॉन्ड रिडक्शन राशि BILFE निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में हस्तांतरित की जा सकती है। पहले इसका प्रावधान नहीं था, अब इसको जोड़ा गया और इसको लागू किया गया। इससे निवेशकों की सुरक्षा, निदेशक की सुरक्षा को इसमें बढ़ाया गया है। महोदय, धारा 41 लेखा परीक्षक अधिनियम 1955, ये धारा 10 में संशोधन है। महोदय, अभी तक सर्वाधिक क्षेत्र के बैंकों के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति RBI द्वारा अनुमोदित होती थी। जो लेखा परीक्षक नियुक्त होते थे, क्योंकि सब प्रकार का रिकॉर्ड जो रखने का काम होता था, इसे बिना RBI के अनुमोदन के संभव नहीं था, और तथा इसका पारिश्रमिक RBI द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से ही दिया जाता था। अब इस संशोधन के बाद लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों स्वयं करेंगे, तब बैंकों में प्रतिस्पर्धा पारिश्रमिक प्रदान की सुविधा मिलेगी। महोदय, बैंक ठीक प्रकार से अपना ऑडिट सब प्रकार की चीजों को इसमें करेंगे, इसका प्रावधान इसमें किया गया। यह संशोधन यह निश्चित करने में मदद करेगा कि लेखा परीक्षा को पर्याप्त रूप में पारिश्रमिक मिले, जिससे लेखा परीक्षा मानकों और समग्र वित्तीय निगरानी में सुधार हो सके। महोदय, हमारे विरोधी दल के अनेकों वक्ताओं ने बहुत से विषय की चर्चा की है। कहा गया कि भाई आखिरकार बैंक के संशोधन की आवश्यकता क्यों है। मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि देश के अंदर आज जितने खाते लोगों के खोले गए, लगभग जैसी चर्चा पूर्व में आया कि देश के 54 करोड़ से अधिक लोगों के जनधन खाते खोले गए हैं और 14,000 करोड़ की धनराशि उस खाते में जमा हुई है। ये अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि समाज के लोगों के व्यक्तियों के बीच में, मैं इस बात को भी मानता हूं, जब तक गुल्लक नहीं होगी, बचत नहीं होगी,
कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ के गरीब जनता को गुल्लक के अधिकार से वंचित किया गया था। मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज एक एक बहन का खाता आज बैंकों के अंदर है और अपने सामर्थ्य अनुसार बहनें उस खाते में जमा भी करती है और उसकी सुविधाएं मिल रही है। बैंकों को लोन लेकर भागने की चर्चा हुई, मैं उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कितनी बड़ी संख्या में लोग भाग कर गए हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि जब से देश के अंदर प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व सरकार बनी है, इस प्रकार के जो अपराधी हैं वो अपराधी किसी भी रूप में बच नहीं सकते हैं। और इसका एक व्यवस्थित रूप से जब केवाईसी के माध्यम से सब चीज के माध्यम से व्यक्ति की पहचान होती है तो स्वाभाविक रूप से रहता है कि वो व्यक्ति ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा जिससे कि देश के अंदर उसके द्वारा बैंकों को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा अब मुद्रा लोन की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ महोदय, लगभग ये एक बहुत बड़ी चीज है। बैंकों को आज किस गति के साथ किस सीमा के साथ जोड़ा गया है इसको समझना पड़ेगा। बैंक, मैं तो एक अभी अपने मित्रों से बैठे बैठे चर्चा कर रहा था कि एक स्थिति ऐसी आएगी शायद पैसा छपना बंद हो जाए और सारा लेन देन बैंकों के माध्यम से हो, जिसकी आज स्थिति दिख रही है। हमारे कांग्रेस के एक मित्र कह रहे थे कि बैंकों में लाइन लग रही है। महोदय, आज तो बिजली का बिल ऑनलाइन जमा हो रहा है, आपका मोबाइल की कनेक्टिविटी का बिल ऑनलाइन जमा हो रहा है, हर प्रकार का आज एक एक चीज का जो लाइन जिस रूप में दिखाई देती थी, जहां जहां लाइन लगी लाइन बंद हुई है और इसमें बैंक का बहुत बड़ा योगदान है। आज बैंकों ने अपने सरकारी जितनी भी उनके जो आयाम है उन सारे आयामों को बैंक से जोड़ा गया है और बैंक ने हर जगह सुविधा ग्राहक को दी है कि किसी भी प्रकार से उसे कहीं लाइन पर लगने की जरूरत आवश्यकता नहीं होगी। यूपीआई की चर्चा बार बार हुई है महोदय। यूपीआई का जो लेन देन है वो इस देश के अंदर जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, इस दिशा में निश्चित इसका बड़ा लाभ हमको प्राप्त होगा। मैं इस बात को इस नाते भी कह रहा हूँ कि हम सब लोग जो देश की बैंकिंग परिस्थितियों को आज की तारीख में अवलोकन कर रहे हैं, ये ठीक है, विपक्ष का उद्देश्य होता है सुझाव देना, और मैं इस बात को भी मानता हूँ जितने सुझाव विपक्ष को और आते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के वित्त मंत्री जी ने उन सुझावों को किस रूप में देश के हित में उसको लागू किया जा सकता है उसका उल्लेख हर बार बजट के अंदर किया गया। एक बात मैं और कहना का चाहूंगा महोदय, हर बार के बजट में बैंक के सुधार के कोई न कोई एक सुझाव निश्चित रूप से रहते हैं और उस दिशा में लोगों की आय भी बढ़ती है। हर वर्ष जब आय बढ़ती है तो उसका बैंक में पैसा जमा भी होता है। और आज इस प्रकार की परिस्थिति देश के अंदर बन गई है कि 2 नंबर का काम, मैं तो कई बार इसकी चर्चा भी करता हूं, नोटबंदी की बहुत लोगों ने चर्चा की है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, नोटबंदी का एक असर तो जरूर हुआ। मैं जानता हूं बहुत से जिनका अथार लक्ष्मी माया होगी, उनके यहाँ आग लग रही है, पकड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आंखों में तो आज ऐसा चश्मा आ गया है, उन्हें पता लग जा रहा है कि कहाँ किस घर में कितना पैसा है, और पकड़ के जब जेलों के अंदर जाते हैं तो बड़े बड़े लोग अपने चेहरे छुपाते फिर रहे हैं। ये परिस्थिति देश के अंदर बनी है। ये सख्ती के साथ पैसे को, जो सरकारी पैसा है, बैंक का पैसा बैंक के अंदर जाए। नोटबंदी के समय मैं मानता हूं बहुत से लोगों ने जमा नहीं किया होगा, अधिकतर लोगों ने एक एक पैसा बैंक के अंदर जमा किया। उसका परिणाम रहा कि इतने खाते भी खुले और बैंकों के अंदर पैसे की धनराशि जिस गति के साथ जमा हुई वो भी हमारे सामने उदाहरण है। बहुत से लोगों ने इस व्यवस्था पर अनेकों प्रश्न खड़े किए होंगे। मैं जानता हूं विपक्ष का काम कुछ विषयों को सुझाव देना होता है, प्रश्न भी खड़े होते हैं। उन प्रश्नों का आधार और समाधान केवल और केवल वित्त मंत्री जी कर सकती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी दिनों के अंदर हमने अपने प्रदेश, अपने देश के अंदर जो बैंकिंग व्यवस्था है उसमें और गति के साथ सुधार करना है और बैंक के प्रति लोगों का विश्वास खड़ा हो, उस विश्वास के साथ हम सबको खड़ा होना है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। श्री राम जी। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी के मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। मान्यवर, मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान लाना चाहता हूं। मान्यवर, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का हम उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे चैलेंजेस भी हमारे सामने बढ़ते जा रहे हैं। उसी क्रम में लगभग मान्यवर 30,000 करोड़ रुपए बैंकिंग फ्रॉड के रूप में भी देखने को मिला हुआ है, किसमें डिजिटल अरेस्ट और फेक एप्लीकेशन या ओटीपी के जरिए लोगों के गाढ़ी कमाई, खून पसीने कमाई वो फेक अकाउंटों में जाती है और वहां से मल्टीपल ट्रांसफर होके कहाँ गई मालूम नहीं होता। बैंकों में जाते हैं तो बोलने हैं कि जिस अकाउंट में गया फेक अकाउंट है। 3 से 4 करोड़ रुपए का टर्नओवर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में हो रहा है, लेकिन बैंक कहती है फेक अकाउंट है। ये फेक अकाउंट आखिर करंट अकाउंट कैसे खुला,
इसकी भी जांच होनी चाहिए। जब फिजिकल वेरिफिकेशन होता है करंट अकाउंट खोलने के लिए, फर्म पे जाते हैं, वहां चेक करने जाते हैं, तो कैसे खुल रहे हैं, ये एक गंभीर विषय मान्यवर है। इस पर भी मान्यवर सरकार को अपना ध्यान संज्ञान में लेना चाहिए। और साथ ही साइबर क्राइम थाने बनाए गए, उनमें जिन लोगों को बैठाया गया उन्हें कुछ आईटी के बारे में नॉलेज ही नहीं, वो एप्लीकेशन लिख लेते हैं, एफआईआर लिख लेते हैं, उस पर कोई कार्रवाई हुई कि न हुई उसके बारे में कोई जानकारी नहीं हुई। मान्यवर अभी एक केस हुआ है हमारे नवल कृष्ण थाने गोरखपुर में, 40 लाख रुपए हमारे जानने वाले, उनका पैसा मल्टीपल ट्रांसफर हो गया। बैंक में गए, उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि फला फला बैंकों में आरटीजीएस से पैसा गया हुआ है। बैंक ने कहा ये फेक अकाउंट है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये फेक अकाउंट आखिर खुला कैसे, जब उसमें 3.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है 1 महीने में, 2 महीने में, तो ये देखने वाला विषय मान्यवर। इस पर भी माननीय वित्त मंत्री जी संज्ञान लें। और साथ ही मैं किसानों की बात करना चाहता हूं कि जिन किसानों की फसल बर्बाद होती है, सूखे से बर्बाद हुई, आग लग गई, हैवी बारिश हो गई, फसल बर्बाद हो गई, किसान उसका लोन नहीं दे पा रहा, तो उस केस में बैंक को कम से कम वहां पे वेरिफिकेशन करके उनका लोन माफ करने की भी जरूरत है मान्यवर। साथ ही सरकार से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कई बार कर चुका हूं, कि कृषि मजदूर सम्मान निधि, कृषि मजदूर सम्मान निधि भी देने का काम करे। आपने किसान सम्मान निधि दी, सराहनीय कदम, लेकिन जो रैली में जो हकदार हैं, जिन लोगों ने पेस्टिसाइड डालते हैं, खेत में जाके खून पसीना बहाते हैं, गुड़ाई करते हैं, धूप में हर्बिसाइड डाल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन उन्हें मिलता है 200-250 रुपए। उनके लिए मैं माननीय कृषि मजदूर सम्मान निधि लाने का भी काम करें। माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि कई बार देखने को मिला SC ST OBC के बच्चे जो गरीब होते हैं, उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, स्कूल में, कॉलेजेस में, IITs तक में एडमिशन लेने में असमर्थ हैं, तो उसके लिए बैंक में प्रावधान करें, कम से कम 0 फीस पर कंपलसरी उनको लोन मिलना चाहिए, ताकि वो ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद, अपने एजुकेशन पूरी करने के बाद वो लोन को पूरा कर सकें। साथ ही SC ST बच्चों कई महीनों से स्कॉलरशिप नहीं मिली, MPhil में पैसा नहीं मिला कई सालों से, उसे भी देने का काम करें। OPS को लेकर के मैं सरकार का ध्यान देना चाहता हूं कि OPS को लेकर पूरे देश में कर्मचारी बार बार मांग रखते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब सरकार 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास, कई साथियों ने बोला भी कि जब बड़े बड़े धन्ना सेठों का पैसा राइट ऑफ किया गया, तो इतना बड़ा बजट जब उनका राइट ऑफ कर सकते हैं, तो OPS भी इस देश में लागू कर सकते हैं। इसको लेकर माननीय सरकार इस पर ध्यान देने की जरूरत है मान्यवर। इन्हीं सब बातों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। श्री मस्तान राव वीडा, प्लीज, आई एम कॉलिंग योर नेम सर। सॉरी सर। Thank you, Deputy Chairman sir. I, on behalf of my party, Telugu Desam Party, and our Honorable Chief Minister, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, I stand here and speak on the reforms suggested under the Banking Laws Amendment Bill 2024, sir. The proposed bill introduces 3 key amendments aimed at enhancing the operational efficiency of the banking sector. The first amendment addresses the issue of rising unclaimed deposits, which have surged by 26% to 78,000 crores, as highlighted by recent RBI report. To tackle this challenge, the amendment allows depositors to nominate up to 4 individuals, enabling both simultaneous and successive nominations. This simplifies the nomination process, reduces bureaucratic hurdles, and ensures that depositors' funds don't remain unclaimed or inaccessible. By prioritizing the depositor inconvenience and protection, the government has demonstrated its commitment to addressing evolving financial challenges. The second amendment focuses on enhancing investor protection by mandating the transfer of unclaimed dividends and shares. Although IEPF reserve fund grew from 83 crores in 2018-19 to 86 crores in 2023-24, spending on investor education has declined. The third amendment extends the tenure of directors in cooperative banks from 8 years to 10 years. This measure aligns with the efforts in Andhra Pradesh to enhance the functioning of cooperative societies. The Andhra Pradesh Cooperative Societies Amendment Bill 2024, introduced by State Legislative Assembly, seeks to improve the transparency, efficiency, and overall management of cooperative institutions. By extending the tenure, the amendment aims to ensure continuity and better governance, contributing to the long-term stability of cooperative banks. This amendment reflects the unified functioning of the double-engine Sarkar under the able leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and visionary Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji, and visionary our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh Sri Nara Chandrababu Naidu Garu.
Chandrababu Naidu are steadily building a prosperous and progressive India. The synchronized governance of this double-engine Sarkar ensures that vision of Swarna Andhra 2047, a state where people are happy, healthy, and wealthy, contributes meaningful to the larger goal of Viksit Bharat. This bill is yet another step towards robust governance, stronger financial systems, and empowered citizens. I stand in full support of these reforms that pave the way for brighter and more secure future for all. Jai Bharat, Jai Andhra Pradesh. Thank you, sir. Shri Praful Patel ji, not present. Shri Ravi Chandra Vaddi Raju ji. Thank you, sir. Telugu, sir. Honorable Vice Chairman, sir. Thank you very much. నేను బ్యాంకింగ్ చట్టాల సవరణ బిల్లు 2024పై మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మన బ్యాంకింగ్ రంగాన్ని ఆధునీకరించేందుకు నియంత్రణ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడానికి ఈ బిల్లు ఎంతో ప్రాముఖ్యతను కలిగిందని అభిప్రాయపడుతున్నాను. ఈ బిల్లును పరిచయం చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అభినందిస్తున్నాను. ఈ బిల్లులో ఉన్న ప్రధాన సవరణలు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చట్టం 1934, బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ చట్టం 1949, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చట్టం 1955, బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ అధిగ్రహణ మరియు చట్టాలు 1970 మరియు 1980లకు సంబంధించినవి కావడం గమనార్హం. సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ పరిమితి పెంపు బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ చట్టంలోని 5వ విభాగంలో సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ పరిమితిని 5 లక్షల నుంచి 2 కోట్లకు పెంచడం జరిగింది. 1968లో నిర్ణయించిన పరిమితి ప్రస్తుతం చిన్నదిగా మారింది. ఈ మార్పుతో ప్రస్తుతం ఆర్థిక వాస్తవాలను ప్రతిబింబించడంతో పాటు చట్టాన్ని సమకాలీకరించడంలో సహాయపడుతుందని అనుకుంటున్నాను. సహకార బ్యాంకుల్లో పరిపాలనా సంస్కరణలు సహకార బ్యాంకుల్లో డైరెక్టర్ల పదవీ కాలాన్ని 8 సంవత్సరాల నుంచి 10 సంవత్సరాలకు పెంచడం, బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ చట్టం 1949లోని 10A విభాగం రాష్ట్ర సహకార బోర్డుల్లో కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ డైరెక్టర్లకు సభ్యత్వం కల్పించడం, 16 విభాగం వంటి మార్పులు సహకార బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను మరింత శక్తివంతం చేశాయి. నామినేషన్ నిబంధనల మెరుగుదల బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ చట్టంలోని 45ZA, 45ZC, 45ZE విభాగాల కింద డిపాజిటర్లు, బ్యాంక్ ఖాతాలు మరియు లాకర్ల కోసం 4 నామినీలను సూచించుకునే అవకాశాన్ని కల్పించడం ద్వారా వారసత్వ సమస్యల పరిష్కారానికి ఇది సహాయపడుతుంది. వికల్పరహిత నిధుల వాడకం SBI చట్టంలోని 38A విభాగం అలాగే బ్యాంకింగ్ కంపెనీ చట్టాల్లోని వికల్పరహిత నిధులను ఇన్వెస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఫండ్కి మళ్లించేందుకు వీలు కల్పించారు. ఇది ఆర్థికంగా సమర్థవంతమైన చర్యగా నేను ఏకీభవిస్తున్నాను. ఈ బిల్లులో పలు మంచి మార్పులు ఉన్నప్పటికీ కొన్ని ప్రధాన సవాళ్లు కూడా మన ముందు ఉన్నాయి. సైబర్ భద్రతా సవాలు డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ విస్తృతమైన నేపథ్యంలో సైబర్ దాడులు భారీగా పెరిగాయి. 2020 నుంచి 2024 వరకు 5.82 లక్షల సైబర్ మోసాల కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇందులో 3,270 crores నష్టం జరిగింది. 2024లోనే 2.92 లక్షల కేసులు, 2,054 కోట్ల నష్టం సంభవించింది. మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో ఈ మోసాల సంఖ్య అధికంగా ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం సైబర్ నేరాల నియంత్రణలో దేశానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది. కేసీఆర్ గారి పాలనలో రాష్ట్రంలో 1930 కాల్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇది దేశంలో మొట్టమొదటి పూర్తి స్థాయిలో ఆటోమేటెడ్ సైబర్ నేరాల పరిష్కార IVR వ్యవస్థ. దీని ద్వారా నిధుల మోసాలను అరికట్టేందుకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడుతుంది. ఇక సామాన్య సైబర్ ఫిర్యాదులను నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ పోర్టల్కు మళ్లిస్తున్నారు. 2021 నాటికి 19 కోట్ల మంది బ్యాంకింగ్ రంగానికి దూరంగా ఉన్నారు. 2021 నాటికి 78% మంది భారతీయులకు బ్యాంక్ ఖాతాలు ఉన్నప్పటికీ ఇంకా 19 కోట్ల మంది బ్యాంకింగ్ సేవలకు దూరంగా ఉన్నారు. గ్రామీణ మరియు వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో సహకార బ్యాంకులు, ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు మరింత బలోపేతం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 33 జిల్లాలు, దాదాపు 14,000 గ్రామాలు, 607 మండలాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక స్తోమతను పెంచాలంటే డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ విస్తరణ, ఆర్థిక శిక్షణ కార్యక్రమాలు, సహకార బ్యాంకులకు ప్రోత్సాహాలు అవసరం ఉన్నాయి. మైక్రో, చిన్న మరియు మధ్యతరహా పరిశ్రమలు కోసం రుణ సౌకర్యం MSMEకి మన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వెన్నెముక. కానీ వీటికి సరసమైన వడ్డీ రేట్లపై రుణాలు పొందడం కష్టంగా మారింది. బ్యాంకులు సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు రుణ సదుపాయాలను మెరుగుపరచాలి. రుణ హామీ పథకాలు, తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు సులభమైన రుణ దరఖాస్తు విధానం తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. నా సిఫార్సు తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రంలో సహకార బ్యాంకులను ప్రభుత్వ మద్దతిచ్చి గ్రామీణ బ్యాంకుల్లో సేవలను విస్తరించాలి. అధునాతనమైన సైబర్ భద్రతా వ్యవస్థలను అనుసరించాలి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆధారంగా మోసాలను అరికట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. MSME రుణాలను మరింత సులభతరం చేసి బ్యాంకుల్లో తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు వేగవంతమైన రుణ ప్రక్రియను అందుబాటులోకి తేవాలి. డిజిటల్ సారక్షతపై మరింత దృష్టి పెట్టాలి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు బ్యాంకింగ్ గురించి అవగాహన పెంచాలి. తెలంగాణ రైతులకు అందుబాటులో బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ సమగ్ర విధానం అమల్లో ఉంది.
ముఖ్యంగా మోసాలకు తావులేని దాదాపు సైబర్ నేరాలకు అవకాశం లేకుండా విధంగా బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను ప్రజలకు దగ్గరకు చేరేతో పాటు దేశానికి అన్నం పెట్టే అన్నదాతలకు రుణమాఫీ, బ్యాంకింగ్ రుణాలతో పాటు బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను రైతులకు దగ్గరగా చేసి రైతుల అభివృద్ధిలో నాటి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి సారథ్యంలో స్పష్టమైన బ్యాంకింగ్ సేవలు నిర్వహించుకున్నాం. కేసీఆర్ గారు సారథ్యంలో రైతు రుణమాఫీ, భరోసా కేంద్రం వంటి అమలు చేస్తున్న కిసాన్ సంయోజన లాంటి బృహత్తర పథకాలను బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేశాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత 10 సంవత్సరాల్లో 70 లక్షల మంది రైతులకు ఆత్మగౌరవంతో బ్యాంకింగ్ రుణాలు పొందారు. ప్రధానంగా రైతులకు ₹1,00,000 రుణమాఫీని ఏకకాలంగా అమలు చేసి ఉన్నాం. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం సగం మందికి రుణమాఫీ చేసి సగం మందికి చేయకపోవడం మూలమున సుమారు 50% మంది రైతులు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అమలు చేసిన రుణమాఫీ నోచుకోకుండా ఉంది. 1 సెకండ్, హాఫ్ మినిట్ సార్. రైతు బీమా అనేది భారతదేశ చరిత్రలో కేసీఆర్ గారు ప్రవేశపెట్టిన మరో బృహత్తరమైన పథకం. రైతులు ఏ కారణం చేతనైనా మరణించితే, చనిపోతే కేవలం 10 రోజుల్లో ₹5 లక్షల చెక్కును రైతు కుటుంబానికి అందించి ఆదుకున్నాం. ఇదే నేపథ్యంలో రైతుకు పెద్ద దిక్కుగా లేకపోయినా కేసీఆర్ గారు రైతు బీమాతో ఆ కుటుంబానికి ఆసరాగా నిలిచారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. थैंक यू. श्री संजय कुमार झा जी. आदरणीय उपसभापति महोदय, इतने महत्वपूर्ण बिल पे आपने बोलने का मुझे मौका दिया है। मैं जानता हूं कि पहले जो सरकार थी, इससे पहले जिस हिसाब से लोन दिए जाते थे, लोग बोलते थे कि फोन बैंकिंग चलता था, फोन से ही लोन मिल जाता था, बड़े लोगों को मिलता था। और मैं पिछला रिकॉर्ड देख रहा था कि जब बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया और बैंकों को 3,10,000 करोड़ रुपए दिए गए जो वित्तीय संकट से निकल सके, इसका एक जबरदस्त प्रभाव पड़ा। मुझे लगता है कि बैंक ने 2014 से अब तक 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की है। बैंकिंग क्षेत्र का खराब ऋण अनुपात अब 2.7% के न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया है, जो 2011 से सबसे कम है। वित्त वर्ष 2023-24 में 3 लाख करोड़ से अधिक का लाभ बैंकों का हुआ है। इसी तरह मैं देख रहा था कि जो हम लोग तो गांव में देखते थे कि लोग जाकर के लोन साहूकार से ही लेते थे और बड़े इंटरेस्ट पे लोन जाकर के लेते थे। अब जब बैंकिंग सिस्टम गांव तक पहुंचा, लगभग मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 54,000 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिसमें से 56% खाते महिलाओं के। कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण वृद्धि 2.5% हुई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 30 लाख करोड़ से अधिक वितरित किया गया है, जिसमें 68% महिलाएं हैं जिनको ये लोन दिया गया है, मुद्रा लोन जो है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 67 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रदान किया गया है, जिसमें 45% महिलाएं हैं जिनको ये लोन मिला है। उसी तरह मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 47 करोड़ लाभार्थियों को दुर्घटना बीमा दिया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 21 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 2 लाख रुपए से काका जीवन बीमा कवर प्राप्त हुआ है। मैं एक चीज जो मैं देखा, जो फिनोमिनल है, जो आज के डेट में दिख रहा हूँ, खास करके अपने स्टेट में देखता हूँ, जहाँ की कम प्रचलन था कैशलेस का, कार्ड का, शायद अर्बन सेंटर में होगा, पटना में होगा, लेकिन मैं गांव में देखता हूँ जिस तरह से सब्जी खरीदने के लिए, अपना अनाज बेचने के लिए लोग अब उनके अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर हो जाता है। और मैं वित्तीय वर्ष 2017-18 में डिजिटल लेन देन का कुल वॉल्यूम 2,071 करोड़ रुपया था, जो अब बढ़ करके 18,737 करोड़ रुपया हो गया। 44% का ये वृद्धि हुआ है। यूपीआई एंड रुपे दोनों तेजी से वैश्विक स्तर पर फैल रहा है, जिससे भारतीयों के लिए विदेश में रहने और यात्रा करते समय सरल क्रॉस बॉर्डर भुगतान संभव हो पाता है। वर्तमान में यूपीआई 7 देशों में लाइव है, जिसमें यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस है। एशियाई वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में भारत में वैश्विक वास्तविक लेन देन 49% रहा है। आज
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र केवल मजबूत नहीं हुआ है, एक सामाजिक बदलाव का प्रतीक बन गया है। आज बैंकिंग को सिर्फ एक वित्तीय प्रक्रिया नहीं है, जो गांव में जो लोन लेते थे उनको डायरेक्ट एक्सेस इन सब चीजों के हुआ है। और बैंक ऋण वृद्धि 60% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। बैंक ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरण किए हैं। और मैं देख रहा था हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फोर्स है जो जीविका दीदियों का, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जुड़ी हुई है, और उसमें 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई है। आदरणीय वित्त मंत्री जी गई थी बिहार गई थी दरभंगा मधुबनी एरिया में, और वहां पर जा करके उनका बड़ा एक कैंप लगा था जहां खुद इन्होंने लोन डिसबर्समेंट किया था। और मुझे लगता है कि उसमें 50,000 से ज्यादा पार्टिसिपेशन था जो महिलाएं आई थी उस कार्यक्रम में। और जिस स्केल का ये कार्यक्रम हुआ, जिस हिसाब से लोन डिसबर्समेंट हो रहा है, पहली बार मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी आई है बैंकों में। पहली बार मुझे दिखाई पड़ रहा है कि लोगों को एक्सेसिबिलिटी है कि लोन मिल जाता है, कम रेट पे लोन मिलता है, और गरीब के घर तक ये बैंकिंग सिस्टम जो है वो पहुंचा है। इसलिए मैं इस बिल के पक्ष में समर्थन के लिए खड़ा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Finance Minister Shrimati Nirmala Sitharaman to reply the discussion. So let me first thank you for coming over to be here as a part of this discussion and lead it from the chair, despite and unmindful of your requirement of rest and so on. I'm indeed grateful for your presence. Health Sir, and economy sometimes suffer similar challenges. Thank you. We have to rise to the occasion. Sir, I'm indeed grateful that 24 members of this House have participated in this debate. And I'd like to start from saying that in 23-24 budget, I had mentioned that to improve, I quote, to improve bank governance and enhance investor protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India are proposed. That was in the 2024 budget. And we are actually having taken a bit of time between the two houses and also before presenting it to the Lok Sabha. We had worked on this banking amendment bill, which is unique at the same time significant in some few ways. This is an amendment bill which is coming in, which is on 8 different themes. I spoke about protection of bank account holders' interests and also simplification and so on. This particular banking laws amendment bill, sir, will have an impact on 5 different acts. It's unique in that sense, and it's unique that 8 different themes of amendments, meaning amendments for one particular theme and amendment for another particular thing, and so on. 8 different themes are being covered to attain the purpose which was stated in the budget speech. 19 sections in these 5 acts will be touched, and therefore I want to first of all say there are 5 acts: the Reserve Bank of India Act 1934, Banking Regulation Act 1949, State Bank of India Act 1955, the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act of 1970, and the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1978. These are the 5 acts on which the proposed amendments will have an impact, and they spread on 8 different reasons as to why we are doing these. Before I get to specifics of what are these amendments, I want to just place it for the record and also to recall the members from their memory that from 2014, when our banks were under severe stress which were built up, excessive
stress which was built up over several years, particularly on the loan portfolios, had reached a situation of crisis, and our economy anyway had reached the fragile 5 position. So in order to address the major banking crisis related matters, reforms were undertaken. We implemented the Enhanced Access and Service Excellence, short acronym being EASE, Enhanced Access and Service Excellence. EASE was brought in the banks. We enacted the Insolvency and Bankruptcy Code in 2016. We also put in place a very robust banking governance framework. We set up the National Asset Reconstruction Company, the NARCL, and then we also undertook amalgamation of public sector banks. And these are few of those significant steps taken to restore banks to good health. So the gross NPAs, the outcomes are really there for all of us to see. The gross NPAs of scheduled commercial banks were at a multi-year low of 2.5% in September 2024. So those measures began from 2014, and today when we are in 2024, September 24, some months ago, the multi-year low level of gross NPA of 2.5% has already been reached. System level capital to risk weighted asset ratio, which is known as CRAR, of 16.7% in September 2024 was also achieved, and it is well above the regulatory minimum level, meaning if we had reached a certain level that would have been sufficient. We improved on it and have bettered it. So the steps taken under the leadership of the Prime Minister in getting the banks to some kind of good health are showing results across various indicators which measure the health of the banks. Public sector banks have also recorded the highest ever net profit of 1.41 lakh crores in the previous financial year. And if that is the level at which they achieved profitability in the net profitability in the previous year, I'm confident that this coming year also India's banks will attain even greater heights. Sir, even though the NPAs have reduced drastically, the government has remained absolutely committed to taking stringent recovery action against willful defaulters. The debate saw very many members speaking about willful defaulters going away from the country. Fugitive offenders have also, economic offenders have also left the country. What are we doing about it? I would give a brief remark now, but I'll get into specifics when I address the specific members who spoke about it. I have stated in this house several times that the write-offs don't mean a wave off by banks. I repeat that line, but then I'll elaborate on what it means actually. Write-offs do not result in waiver of liabilities of borrowers, and therefore it does not benefit the borrower. So it's not as if we waived off or the written off is actually waive off, resulting in benefiting those huge defaulters. Sir, close to the end of the debate, we saw member Ravi Chandra Vadiraju, who spoke in Telugu. And I'm grateful for one line that he said. He said, you know, under his government, till recently, which was ruling in Telangana, they've taken a lot of steps towards giving relief to the farmers. Rina Maafi, as it's known there. And Rina Maafi actually under their government had been very effective, and that they have taken care of farmers who were under severe indebtedness. And in that, I'm glad he observed, I'm not commenting on anything to do with the Rina Maafi of the TRS regime, as we would call it, the BRS regime. I'm not commenting. But one line that he mentioned, as different from the Congress's time when waiver was announced, Rina Maafi was announced,
But actually half the farmers did not even get it. It's an observation, if I understood his Telugu right. Did you say that, sir? So that is the point which all of us have been repeatedly saying. Announce Rinamafi or loan waiver, but you really don't do it. Half the farmers are left without Rinamafi, and the banks would put it on the record saying you've been covered under Rinamafi because the Congress government had given that promise. And later, because under a one-time settlement, your loans have been written off, the farmer is not even eligible for one more new loan. So instead of serving the farmers, the Congress's notorious 2008, by which we were told through the media that they won election and came back in 2009, that notorious Rinamafi had left many farmers neither here nor there. They were not sure whether they got the Rinamafi, and if indeed the Mafi was given, are they eligible to go ahead? No. You have a layer of small farmers looking up to the banks to give them some kind of a relief. So I want to highlight, like the way they speak about food security, like the way they speak about the Manrega in the rural areas, all schemes brought by them, none of which were effectively implemented. And when Prime Minister Modi implements them without corruption, without malpractice, and without any kind of wrongdoing, they would say, oh, that's our scheme. Yes, it was your scheme, but you kept it in paper or you mismanaged it. I've heard honorable members say, as different from the way Congress has given Rinamafi, our Rinamafi is better. I would want to highlight the fact that deceiving the farmers is for nobody's good. If you really want to help the farmers, here is Prime Minister Modi putting 2,000 rupees every time, annually 6,000 rupees into their account through the transparent DBT. Actually, it helps the small farmers. Show it in action, but don't put it in as though it's a right which we've given to the farmers, and end of the day, farmers don't feel that the right has been given actually to them. So I was very glad to hear that member. I've gone much ahead. I would have spoken when I'm responding to him. But that is the way Congress's policies, which have all been big time talk, no action in the ground. And if there's action, it's ridden with corruption. Non-existing individuals get the waiver, get the benefit, others who deserve don't get it. So that is something which I've, thankfully, there's another party member who's saying it, not me. Sir, so the public sector banks have recorded the highest ever net profit of 1.41 lakh crores in the last year. I'm sure they will do it this year as well. So I want to highlight the fact, most often they say fugitives, they've ran away with public money, small people are being harassed. No, small people should not be harassed. We are periodically through the Reserve Bank of India telling banks, telling our NBFCs that you have no business to go and harass anybody. Duly, yes, follow it up, but you can't threaten people or get into their house at ungodly hours and threaten them and so on. But with all that said, the rich borrowers are let to go off, they run away from the country. I want to give you this number, sir, which we placed in this house during question hours also several times. The Enforcement Directorate has successfully restored properties valued at approximately 22,280 crores to victims or legitimate claimants, where ED has enforced its action and taken away from the accused or those who are charged with these offense with the court's permission and restored properties to the legitimate claimants. So for those of us who seem to think, oh, ED is let loose, they are going on a political vendetta. No, people's money is being given back. People's properties are being given back. This work is also being done by ED, and I want the honorable members to recognize that. And when we say money is being taken away, only big people are running away, small people are being suffered, 22,280 crores, legitimately through the process, getting the stamp from the court is being sent to the due claimants. So that work is got to be recognized. Sir, further, we'll also be focusing on a lot of structural reforms, but our efforts are not restricted only to that. We have deepened financial inclusion, took banking to the last citizen, and ensured that citizen-centric banking
is importantly served as an interface. Quite a few members, and the last speaker, Sanjay Jaji, also spoke. 55 crore Jan Dhan accounts have been opened, of which over 55% of them are women, and 66% have been in rural or semi-urban centered bank branches. Sir, Global Partnership for Financial Inclusion, in its Financial Inclusion Action Plan report, which was published in 2023, says, I quote, by leveraging DPIs, digital public infrastructure that is, by leveraging DPIs, India has achieved over 80% bank account penetration, a journey that would have otherwise taken 47 years through traditional means, unquote. So this is a report which has been published somewhere else. They recognize the financial inclusion using DPI, and that actually is something which they have measured. Otherwise, if you followed the traditional methods of inclusion, I heard Honorable Member Shakti Singh Gohil talk about how the intention of nationalization of banks was to reach the poorest of the poor, give them the financial inclusion. Well taken, sir. But our grievance, as I said, in every one of the acts which they claim, it's ours. Rightfully, they are theirs. They introduced it. But in 47 years, what would have been otherwise achieved has been achieved through DPI in these 10 years. And that is why, since the nationalization, although it was intended to take bank to the poorest of the poor, the results were not much to talk about. So that has to be recognized. So numerous steps have been taken for financial inclusion, and does not stop with merely banking the unbanked, and instead enables meaningful engagement with financial services. So this has been achieved primarily because there are two pillars of funding the unfunded and securing the unsecured. When I say funding the unfunded, 68 lakh street vendors have been supported by PM Swanidhi. There are more than 94 lakh PM Swanidhi loan accounts, because there are 68 lakh street vendors who are supported by the scheme. But when it shows that people have graduated from the lower end of the loan, repaid it, and graduated to be eligible for the upper end, and therefore they have benefited even from that. So 68 lakh street vendors, but 94 lakh Swanidhi loan accounts have been recorded, and in all the three tranches, 10,000 the first tranche, 20,000 the second tranche, and 50,000 the third tranche. Second point, sir, on funding the unfunded. 50 crore loan accounts sanctioned under the PM Mudra Yojana. Again, these are unsecured loans, but guaranteed by the government. Securing the unsecured, sir. 47 crore enrollments, slightly over 47 crore enrollments have been done accident insurance cover under PM Suraksha Bima Yojana. Over 21.67 crore enrollments have been done for the life insurance cover under PM Jeevan Jyoti Bima Yojana, and over 7 crore subscribers for the Atal Pension Yojana. So inclusion, both for funding of the unfunded, securing the unsecured, both of them have taken place throughout these 10 years. So about this bill, and I said there are 5 different acts which will get impacted. I just want to tell you about those 8 different themes which I said are being undertaken. Many members have spoken about in detail, so I won't highlight too many of it. The current reporting Friday, so every bank reports every Friday, that system has several limitations. So the accuracy and effectiveness of reporting data is affected. Therefore, that is now being changed through one of the amendments so that it can be the last day of the fortnight or month or the quarter, instead of being somewhere in between saying report on a Friday. So that particular amendment will affect
5 different sections of 2 different acts. So that is one of the things. The second theme, sir, is on the interpretation of substantial interest. So we are redefining substantial interest. Currently, it is either 5 lakh rupees or 10% of the paid up capital. We retain the 10% paid up capital. We are not changing that. But 5 lakhs for the substantial interest definition, which was last touched in 1968. So since 68, it remains at 5 lakh. Now we are enhancing it to 2 crores, but retaining the 10% paid up capital for defining what is substantial interest. That's the second section, so the second theme. The third theme is about the tenure of directors, excluding the chairman and the whole-time directors. This is particularly relevant for the cooperative banks. Why do we need to at all do this? In the banks, otherwise, commercial banks, it is 8 years, and we are not doing anything about that. That is being retained. But the current system allows for cooperative banks to have their directors only for 5 years. We want to align that with what is constitutionally provided for those cooperatives, which has not been till now thought through. So the Constitution provides for cooperative banks directors to have a term of 10 years. By limiting it to 5 years, they've actually been denied what Constitution provides them. So we want to now change that and then align it with what the Constitution expects us to do. So that will be 10 years of first 5-year term plus another 5-year term. So 10 years will be available for them. The next one is about cooperative banks. The RBI's existing rule does not allow in the cooperative banks people to hold more than one position anywhere as director. Technically, the RBI can appoint directors to more than one bank at any particular time. So one person can be appointed in 1 or 2 or 3 banks if the RBI does it exceptionally. But in cooperative banks, the same rule which applies to regular banks also applied, that you can be in one place one time at a time only. Whereas the system through which people get elected in the cooperative movement, here's they first get elected at the lower rung, then they come to the middle rung, and then they come to the state level. So it is inevitable that they will have more than one position. So we have to, from the light of the cooperative movement spirit, recognize that they can be in more than one place. So that amendment is being brought in. This day and age, banks have terrible problem if the nomination is not made, or if it is wrongly made, or if it is made for cash and FDs also, too many names being given and so on. So we've said simultaneous nomination will be permitted for cash and for FDs, whereas for lockers and articles in safe custody, it can be only simultaneous nomination. The option is given. These are already being used in insurance policies and so on. It is easier to handle claims. Otherwise, people who are running after to prove that they are the actual nominees becomes very difficult for them, and therefore this is being brought in. It has a bearing on nearly 4 sections of different acts. So that is the other. The other one is, again, applicability of interpreting managing director and deposit insurance corporation, sir. This is one of the omissions while drafting the previous act, Banking Amendment Act of 2020, in order to make up for what was oversight problem omitted. They are now being brought in. Definition of deposit insurance corporation and definition of managing director. Nothing new is being changed, but what was omitted inadvertently is being brought in. And then the transfer of unclaimed dividend is being brought in here. Currently, sir, it is important for us to recognize that public sector banks have provisions for transferring unclaimed dividends
to the Investor Education and Protection Fund. However, there are no provisions for transferring unclaimed shares, bond redemption, interest amounts to the IEPF. So the proposed amendment seeks to include these additional categories, ensuring that the unclaimed shares, bond redemption, interest amounts are also transferred to the IEPF. So that is the 7th, and the 8th is on the auditor remuneration, which is fairly straightforward, sir. I'm not explaining that. So I'll come to individual members who have raised some issues. So member Shakti Singh Gohil is not here. Of course, he sent me a note saying, The sorry, honorable member had sought my leave. Sorry? The Yes, he's honorable also member sent me a Shakti Singh little. Gohil had sought my leave. He had to leave Yes, sir. for some urgency. I recognize that, sir. He's He also had sent me a written he had note. sought my leave. A written Nobody note. is present. Yes, I understand that. He sent me a written note saying he won't be around. But I want to just address some of the concerns that he's raised. Sir, willful defaulters is one thing which Mr. Gohil had raised. What action has the government taken in such cases, he said. I just want to highlight a few. As on 29/1/2025, if you look back at the last 5 years, as I said, the Directorate of Enforcement has taken up around 912 cases related to bank frauds, including those pertaining to willful default. In these cases, 44,204 crores of proceeds of crime have been attached, frozen, or seized. So in 8 cases, assets amounting to 22,276 crore have been restituted to banks or to the legitimate claimants or victims of money laundering. 144 accused persons have been arrested. 239 prosecution complaints, including 66 supplementary PCs, have been filed before special courts. 23 accused persons have been declared proclaimed offenders, and 9 have been convicted under the PMLA, so Prevention of Money Laundering Act. So under the Fugitive Economic Offenders, about which several members spoke, several action has been taken, sir, who have fled abroad. As of 31st December 2024, 9 individuals have been declared as fugitive economic offenders, and assets worth 749.83 crores have been confiscated. So action is going on relentlessly. We have not let it lie low. Sir, Member Saket Gokhale spoke about several issues. He's here. Sir, I've explained write-offs and waive-offs. I was surprised to hear it back again from Member Gokhale. Borrowers of written-off loans remain liable to repay their dues. They are not let off. Banks continue to pursue recovery action in written-off accounts using various mechanisms. They filed suits in civil courts or debt recovery tribunals. Taking action under the Securitization and Reconstruction of Financial Crimes, Assets and Enforcement of Security, the SURFACE Act, filing cases in the National Company Law Tribunal, NCLT, under the Insolvency and Bankruptcy Codes, negotiated settlements or compromises with borrowers. These are several such steps. Selling non-performing assets to asset reconstruction companies. So the write-off mechanism is an established practice globally and does not absolve the borrower of their liabilities. It enables banks to utilize their resources more effectively, even as they continue the recovery process. So as a result of these reforms implemented by the government, performance of the public sector banks has significantly improved, and I repeat, the gross NPAs of public sector bank have declined. Gross NPA ratio of public sector bank now stands at 2.85% in December 2024 from the peak gross NPA ratio of 14.58% in March 2018. March 2018 is when you saw all those loans prior to 2014
coming to be recognized as NPAs and action being started from then. That was the peak, and that peak was 14.58%. But today, the gross NPAs are, when I say today, December 2024, 2.85%. Pursuant action is showing itself. Capital adequacy ratio improving to 14.84% in December 2024, and I'm talking of provisional data, from 11.66% in March 2018. That's the high watermark, sir, for a ignominious NPA, but that's the high level it reached. PSBs recorded the highest ever aggregate net profit of 1.41 lakh crore in 23-24 and 1.30 lakh crore up to December 2024. That's only for 3 quarters. So there was also this question about gold loans given by NBFCs. I want to use the RBI data and say gross NPAs in gold loans of scheduled commercial banks and major NBFCs rose by around 18% between March and June 2024. That's the data RBI has given. But it is important to note that the NPA ratio in gold loans still remains low. What is it? It is 0.22%. For gold loans alone, the NPA is 0.22% over the gross NPA of all public sector banks, the gross, which includes all kinds of. The gross NPA is 2.85, and if you were to look at gold loan, it is only 0.22%. Sir, the same thing for NBFCs. 3.5% is the gross NBFCs, all of them, for all types of portfolios. But on the gold loan part of it, the NPA in NBFC is 2.58% only, compared to the 3.5% overall for all portfolios. So both the Reserve Bank of India and the government have taken timely and targeted steps to address the issue, and banks and NBFCs have been directed to strengthen appraisal practices, ensure proper gold valuation, comply with the LTV norms, and take action in case of non-repayment, including gold auctions with due notices. So public sector banks were also to conduct a comprehensive audit of gold loan portfolios to ensure full regulatory compliance. No major lapse has been reported. That's about the gold. Penalty charges for non-maintenance of minimum balance was also an issue which Member Gokhale raised. Sir, this has been said several times in this House. No minimum balance is required for Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana accounts. Therefore, no such penalty is charged on 55 crore PM Jan Dhan Yojana accounts for not keeping minimum balance. This issue was also probably raised by Member Raghav Chadda when he spoke. Sir, Honorable Member KRN Rajesh Kumar spoke on a few issues. On the nomination system proposed is confusing. I want to say the current provisions of the BR Act, sir, permits the nomination of only one person for the repayment of depositors' money, articles kept in safe custody and safety lockers, and so on. This particular limitation has led to a lot of confusion and challenges, particularly in cases where both the nominee and the account holder or the locker holder pass away, leaving the assets without any valid nomination. So as a result, banks are sitting not knowing how to handle the situation. Such situations have created significant difficulties for legal heirs as well. So when they're claiming their dues, even they face a lot of difficulty. So in order to address these issues and enhance the service of the banks, this proposed amendment has been brought in. Depositors will still have an option for either successive or simultaneous nomination to be given.
Whereas for articles of safe custody and safety lockers, only successful nomination will be given so that there is no confusion. Successive nominations ensure that if the first nominee is not available, the second nominee in line will become operative, maintaining continuity and reducing complication for the legal heirs. So you also raised the issue of the PSL shortfall. It's a clear indication when there is a shortfall in PSL, it means that banks are effectively distributing the priority sector lending, which is their duty. If they haven't done it, then the amount which goes to the NABARD will be more. Whereas if they have fulfilled the conditions and the PSL distribution is happening fine, obviously the amount will be reduced, which comes to the NABARD and let's say SIDB. So it actually proves that the banks are achieving the target of 40% PSL, which is a target given to them. And therefore, if the money is reducing, it is because they are already using it well. So member Raghav Chadda, he's also given, I'm sure he sent you a note seeking your indulgence. He's given me a letter saying, sorry, I'm not here for the reply. Oh, yeah, sorry, I didn't notice. So, but I did. And he did not send notice to me, and I don't take cognizance. Oh, fine. If someone goes directly to the executive. You should have sent it to the chairman first. So, so he has created a difficult situation. Yes, Sending sir. a communication and yet present. Yes, sir. But because he didn't send it to you, dar ke mare aa gaye. Sir, he raised the question of public grievances and grievance redressal. Honorable Finance Minister. Honorable members, it is now going to be 6 p.m. If the House so agrees, we may sit beyond 6 p.m. today till the disposal of the Banking Laws Amendment Bill 2024. Do I have the leave of the House to extend the sitting beyond 6 p.m. as indicated? Honorable Finance Minister. Sir, on the grievance redressal, I want to say that there is a multi-layered grievance redressal resolution mechanism. Grievances related to banks and financial institutions can be lodged with the centralized public grievance redressal and monitoring system, the CP Grams portal. As per the guidelines issued, the stipulated time limit for redressal of grievances on CP Grams is 21 days. An appeal mechanism is also available for unsatisfied petitioners, and this with a disposal timeline of 30 days. To further strengthen this institutional framework, the Reserve Bank of India launched in 2021 the Integrated Ombudsman Scheme, combining earlier ombudsman schemes for banks, NBFCs, digital transactions into a single streamlined system. So also, Member Raghav Chadda and Niranjan Bishi had raised this issue of availability of banking infrastructure, particularly in the rural areas. I was amused, sir, if you will allow me a light-hearted exchange. If Member Raghav Chadda doesn't take offense, I would like to say he'd observed the number of fans in the banks, number of fans which are working, the bank and its condition, how many whitewashed, how many not painted. I'm really so satisfied. There are members of parliament who are otherwise very busy with many things international, have found time to go to the rural banks and to look at them, to say there is no fan here, there's no door here, there's no chair here. Raghav Chadda, please do more of this. It will help people within the country, because with your exposure, particularly to the Western world, you can do a lot more here. Please do. So I was very amused, sir. Honorable Finance Minister, sir, you have been very mild. You have been absolutely mild. I have seen changes in Raghav Chadda recently.
in several aspects, I don't want to share that with the finance minister. Okay. That should be okay. Honorable Finance Minister. Thank you. Sir, banking network in India has actually grown significantly, sir, with 42,511 branches of scheduled commercial banks added till September 24, taking the total number of branches to 1,65,501 as of September 2024. Of these, 85,116 branches belong to the public sector banks. The distribution of these branches as of September 2024 is as follows. 30,539 branches are in metro areas. 55,372 branches are in rural areas. 45,314 branches are in semi-urban areas. And 29,276 branches are in urban areas proper. 99.88% of the 6,01,328 inhabited mapped villages are covered by financial infrastructure, ensuring a banking touch point, that is a bank branch itself, brick and mortar, business correspondent, or an India Post Payment Bank center are all within the 5-kilometer radius of these villages. So 6,01,328 villages, inhabited villages, are mapped, and of these 99.88 of them percentage have at least a bank touch point, be it a banking correspondent or a branch. So on cyber security, again, quite a few members asked question. Raghav Chaddaji asked, Niranjan Bishiji asked. I want to say, sir, I'm sure this information is available. The Indian Cybercrime Coordination Center, I4C, under the Ministry of Home Affairs, serves as a national nodal point for coordinated efforts to tackle cyber crimes, including financial frauds. Cyber Fraud Mitigation Center operates in collaboration with major banks, payment intermediaries, telecom service providers, the law enforcement agencies to address and prevent financial cyber frauds effectively. The National Cybercrime Helpline 1930, operational 24/7 across all states and union territories, has been established to ensure immediate reporting and redressal of financial cyber crimes. The Digital Intelligence Platform, DIP, developed by Department of Telecommunications, ensures real-time coordination among stakeholders, including telecom service providers, financial intermediaries, and law enforcement agencies. Sir, I'm told that there is a Chakshu facility on the Sanchar Sarathi portal, which empowers citizens to report fraudulent communication such as spam calls, phishing attempts, enhancing public vigilance and fraud prevention effort. So Member Harish Biran, I have just one more, sir. I won't take much of your time. Member Harish Biran said, why separate 5 acts amended in a single legislation? I tried saying that even in my opening statement, sir, but the Banking Laws Amendment Bill, which is now brought in, includes amendments to multiple banking legislations to address interlinked and consequential issues effectively. So instead of going one by one to all these acts, we are doing it at one go because the intent and also the objective are all across the board common. So shifting of submission timelines for statutory reports in both the RBI Act and BR Act is being addressed by the single bill, and transfer of unclaimed dividends, shares and redemption is also the other one, which touches on 3 acts. So addressing all of these in one bill ensures consistency, avoids duplication, and also achieves a cohesive regulatory framework for the entire banking sector. And that's the reason why we have taken up this route. So the last one, which I would like to take up, is Member Sivadasan.
has spoken about quite a few issues, particularly about the bank employees. I'd like to say, sir, the IBA, the Interbank Association, signed the 12th bipartite or the 9th joint note on 8/3/2024. Since 1992, this is a point which I'd like to repeat any number of times, but I will say it here, sir. Since 1992, when 5-year bipartite agreements were started, that's when it started. This time, agreement has been signed within 14 months. Earlier, the average delay would be 30 months. We completed it in less than that, half the time. So in respect of the increase in salary and allowances for serving employees of banks, there will be an overall increase of 17% in the salary and allowances of the annual payslip expenses for 2021-22, which will be 12,449 crores for all public sector banks. Out of this, 17% and 3% will be loaded onto the basic pay, and the remaining will be distributed in the form of other allowances. New pay scales will be calculated after merging the DA with the basic pay as on 31/10/2022 and adding thereon a loading factor of 3%. So that's about serving employees. For pensioners, sir, monthly ex gratia has been considered in addition to pension for the pensioners and family pensioners as a one-time measure and will be applicable to the current settlement period itself. Third major thing, sir, there are several other issues, the 12th BPS and residual issues of the 11th BPS, which is old legacy issues. All of them have been handled. The pre-1986 ex gratia to retirees and their families have been increased from 4,946 rupees. They were getting only that. And 2,478 rupees. Ex gratia for retirees, 4,946. To the families, 2,478 have now respectively been increased to 10,000 rupees per month in both the cases. So where you were getting only 2,478, you're getting 10,000. Where you were getting 4,946, you're getting 10,000 per month now. That is for the pre-1986 retirees. Sir, this will benefit 105 retirees who are still living from that time, elderly, super senior citizens, and 1,382 spouses of those people who had served the banks. Total additional cost is 4.73 crores per annum. It is implemented since February 2023. So 100%, second point, so 100% DA neutralization to pre-2002 retirees and ex gratia. Total additional cost is 631 crore per annum. Total beneficiaries will be 1,81,805 members. DA neutralization is being offered. It is implemented since October 2023. Option to resignees, which was earlier not taken up, who were otherwise eligible to join pension scheme. Total additional cost on this ground is 135 crore per annum. This will benefit approximately 3,198 persons. So that's also achieved, sir. So the IBA has done this work, keeping in mind the bank employees, their families, the pensioners, and the retirees. The last point about Mr. Shivadasan's comment is creation and increase of chief general manager positions in nationalized banks. I'm talking about positions. I'm also talking about the jobs. I'm also talking about the vacancies which are getting filled up. We've taken a step which will enable banks to have better control and supervision, improved asset management, and operational efficiency. With this revision, sir, the number of CGM posts in all the 11 nationalized banks has been increased from 80 to 144. It means people are moving up the pyramid.
You're filling those positions which are then getting vacated. So more people are coming in. Accordingly, the number of GM posts has also been revised from 440 to 576. The number of DGM posts from 1,320 to 1,728. And the number of AGM posts are from 3,960 to 5,184. So I want to underline the point that a total of 1,832 posts have been created in the positions. Therefore, as a result of these steps, so not only people are being allowed to go up in the ladder, new positions are also being created. Jobs are not being created. Honorable Member Shivadasan, it's being created. And people are being moved upwards as well. Promotional opportunities are increasing in banks as well. So thank you very much, sir. Thank you for giving me this. Shivadasan has a point. Honorable Finance Minister. Yes, sir. Only Shivadasan. Yes. No. Sir, then it will be endless. Point of order, yes. My yes. question is, One second, point of order. First I will, sir. My question is, the thousands of persons are working in our banks, say contract workers. So the reservation is not there. And also because of the vacancy, they are working there as contract workers. So government have any plan to fulfill the posts? So creating the jobs in the general manager and this top posts. But thank you so much. Thousands of posts are vacant. Thank you, and those. What's the point of order? 1 second, point of order. Rule 261, sir. If the chairman is of opinion that a word or words has or have been used in debate, which is or defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may in his discretion order that such word or words be expunged from the proceedings of the council. Sir, I didn't want to interrupt her during her course of speech. It was a good flow. And during her course, during her reply, she said that Congress Party's 2008 notorious loan waiver. Notorious is an unparliamentary word, sir. Kindly expunge it. I will look into the matter whether it is unparliamentary or not. Let me again look at it. Honorable Finance Minister, one particular member, Shakti Singh Goyal, had raised one issue, yes, sir, that communications emanating from the Honorable Member of Parliament did not evoke even a response from the concerned institution. Prestige of a member parliament is fundamental to this house. And if a member parliament does not get prompt, adequate response, the dignity of the house is also compromised. I recollect my days in 1990 when I was a junior minister, and the problem was then also the same. Some exemplary initiative will have to be taken by the government to sensitize one and all that if there is no response to a communication of an honorable minister, honorable member of parliament, visitation will be of exemplary consequences. And I'm sure the several directives that are already issued in this remain yet to be complied if I go by what the honorable member Shakti Singh Goyal has said. I'm sure as a senior minister, you will take steps and accordingly sensitize the administration. Sure, sir, I'll do that. If you will permit me, sir. Just one more thing which Member Shivadasan said about jobs. It's all right, you're creating GM's post and other things. No, it's not just that. We have created 3.94 lakh of jobs since 2014. 3.94 only in public sector banks. And they are of different cadres and different levels. State Bank of India alone has created 94,000 jobs. 41,000 jobs by Bank of Baroda.
36,000 jobs by Bank of India, 7,000 jobs by Bank of Maharashtra, 54,000 jobs by Canara Bank. I'm rounding off the numbers. 15,000 by Central Bank of India, 21,000 by Indian Bank, 7,000 by Indian Overseas Bank, 55,000 by Punjab National Bank, 8,000 by Punjab and Sindh Bank, 13,000 by UCO Bank, and Union Bank of India has created 38,000. I've rounded up the figures, but it is 3.94 lakh jobs since 2014. So, Honorable Finance Minister, you are beneficiary. When I reflected on the prestige of members being sustained, no, sir, I take. And therefore, you need to take proactive steps now in that direction. Obviously, sir. If the chair... Zero tolerance with your ministry and sensitize others also. Sure, sir. The question is that the Banking Laws Amendment Bill 2024 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 3 by Sri A. Rahim. Are you moving the amendment? Sir, I am moving the amendment. Number 6 by Dr. John Britas. I am moving the amendments. Number 11 by Dr. V. Sivadathan. Are you moving? Are you moving the amendment? Yes, sir, I am moving the amendment. Amendments moved. I shall first put the amendment moved by Sri A. Rahim to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Dr. John Britas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Dr. V. Sivadathan to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the clause 3 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The clause 3 is adopted. Insertion of a new clause 3A. There is one amendment for insertion of a new clause 3A, number 7 by Dr. John Britas. Are you moving the amendment? Sir, I am moving the amendment, sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. Clause 4 stands part of the bill. There are 4 amendments. Number 4 by Sri A. Rahim. Are you moving the amendment? Sir, I move the amendment, sir. Number 8 by Dr. John Britas. Are you moving the amendment? I am certainly moving the amendment, sir. Number 12 by Dr. V. Sivadathan. Are you moving the amendment? Yes, sir, I am moving the amendment. Number 17 by Sri S. M. Samugam. Are you moving? Not present. So amendments moved. I shall first put the amendment moved by Sri A. Rahim to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Dr. John Britas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Dr. V. Sivadathan to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the clause 4 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no.
I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 4 is adopted. Clause 5 stands part of the bill. There are 3 amendments. Number 5 by Sri A. Rahim. Are you moving? Sir, I move the amendments. Number 13 by Dr. V. Sivadasan. Are you moving? Yes, sir, I am moving the amendment. Number 18 by Sri Santosh Kumar P. Are you moving? I move. Amendments moved. I shall first put the amendment moved by Sri A. Rahim to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Dr. V. Sivadasan to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Sri Santosh Kumar P to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the clause 5 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 5 is adopted. Clause 6 to 13 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 6 to 13 are adopted. Clause 14 stands part of the bill. There is one amendment, number 9 by Dr. John Britas. Are you moving the amendment? I am moving the amendment, sir. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the clause 14 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 14 is adopted. Clause 15 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 15 is adopted. Clause 16 stands part of the bill. There is one amendment, number 14 by Dr. V. Sivadasan. Are you moving the amendment? Yes, sir, I am moving the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put clause 16 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 16 is adopted. Clause 17 stands part of the bill. There are two amendments. Number 10 by Dr. John Britas. Are you moving the amendment? I am moving it, sir. Number 15 by Dr. V. Sivadasan. Are you moving the amendment? Yes, sir, I am moving them. Amendments moved. I shall first put the amendment moved by Dr. John Britas to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the amendment moved by Dr. V. Sivadasan to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the clause 17 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 17 is adopted. Clause 18 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 18 is adopted. Clause 19 stands part of the bill. There is one amendment, number 16 by Dr. V. Sivadasan. Are you moving? Yes, sir, I am moving the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the noes have it, the noes have it, the noes have it. The amendment is negative. I shall now put the clause 19 to vote. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 19 is adopted. Clause 20 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 20 is adopted. Clause 1 stands part of the bill. There is one amendment, number 2 by Sri
Srimati Nirmala Sitharaman ji, are you moving the amendment? Yes, sir. I'm moving the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the clause 1 as amended to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1 as amended is adopted. The enacting formula stands part of the bill. There is one amendment, number 1 by Srimati Nirmala Sitharaman ji. Are you moving the amendment? I move the amendment. Amendment moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the enacting formula as amended to vote. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The enacting formula as amended is adopted. The title stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The title is adopted. Srimati Nirmala Sitharaman ji to move that the bill as amended be passed. So I rise to move that the bill as amended be passed. Motion moved that the bill as amended be passed. The question is that the bill as amended be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill as amended is passed. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 27th March 2025. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।